Everything fine? Okay, so good evening everybody. Hello dear students, I hope you are preparing well. Yes Abhishek, good evening. चलिए तो ठीक है, we are going to start with DC machine and then later synchronous machine we will discuss, right? I hope सभी लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो DC मशीन में जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, अच्छा ये जो डिस्कशन का सेशन है, व्हाट आई हैव ट्राइड कि टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक, करेक्ट, इन दिस 2 आवर फ्रॉम DC एंड सिंक्रोनस आई एम गोइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक, राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन 15 किलोवाट 250 वोल्ट 1200 RPM DC शंट मोटर है देयर, करेक्ट, 4 पोल्स. The machine has a simplex lap winding and 900 armature conductors. Its armature resistance is given at rated speed and rated output. The armature current is this much and the field current is this much. ठीक है, शंट मोटर है, सब दे दिया। अब बोल रहा है कि टॉर्क डेवलप्ड, एफिशिएंसी और स्पीड निकालिए व्हेन द फील्ड फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय 30% बाय फील्ड कंट्रोल, द लोड टॉर्क रिमेनिंग कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विद द गिवन सिचुएशन, अगर मान लीजिए फील्ड फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय 30%, तो उस केस में मशीन का टॉर्क कितना होगा, एफिशिएंसी कितना होगा और स्पीड कितना होगा। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे स्पीड के बारे में जब भी डिस्कशन होता है तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, है ना, EB प्रोपोर्शनल टू फाई एन या EB इज इक्वल टू के फाई ओमेगा। टॉर्क के बारे में जब बात होती है T इज इक्वल टू के फाई आई ए, राइट। तो यही दोनों इक्वेशन से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर एफिशिएंसी तो पता ही है, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेज या इनपुट माइनस लॉसेज बाय इनपुट या फिर आउटपुट बाय इनपुट, वेयरएवर एंड व्हाटएवर इज सुटेबल हम उसको अप्लाई कर देंगे। आई होप इट इज़ फाइन, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, राइट, और फिर टॉर्क डेवलप्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नाउ सी, आप भी ट्राई करिए। आई होप क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर ठीक है, अगर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ताकि साथ साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। सॉल्व करेंगे फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा, तो पहला पार्ट आ जाते हैं, दैट इज, देखो इसमें दे क्या रखा है, टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, हाँ जी सर। और टॉर्क होता क्या है सर, टॉर्क आपने बताया है के फाई आई ए, और टॉर्क कांस्टेंट मतलब कैन आई राइट फाई वन आई ए वन इज इक्वल टू फाई टू आई ए टू, राइट सर। और फ्लक्स बोला है कितना हो गया, 30% से कम किया, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, फाई वन इंटू 75 है ना, इज इक्वल टू 0.7 फाई वन इंटू आई ए टू। तो यहाँ से आई ए टू कितना आ जाएगा, आई ए टू इज 107.14 एम्पियर। सो दिस इज योर करंट, ठीक है। ये टॉर्क रिलेशन से हमने करंट पता कर लिया, क्यों, क्योंकि जब EB प्रोपोर्शनल टू N लगाएंगे ओके। सो थोड़ी सी आवाज़ में कुछ गड़गड़ाहट आ रही थी, तो इसीलिए माइक का पोजीशन चेंज किया गया है, ठीक है। ये IA2 आ गया। अब देखो EB प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन जब लगाओगे तो सबसे सिंपल है, EB मतलब V माइनस आई आर ए करोगे, तो यू नीड करंट इन बोथ द कंडीशन, इसीलिए हमने सबसे पहले करंट निकाल लिया, तो अदरवाइज EB तो निकाल नहीं पाएंगे ना, ठीक है। तो क्या लिखें अब, 200 माइनस 75 इंटू 0.2, ये हो गया EB1। और फिर दूसरे वाले केस में सॉरी 250 है ना, 250 माइनस कितना आया है 107.14, ठीक है, अभी जो निकाला, इंटू 0.2, तो EB1 बाई EB2 हो गया, इज इक्वल टू
दैट 5 इंटू स्टार्टिंग में कितनी स्पीड है 1200 और बाद में 0.751 और इंटू N2 राइट 5151 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो सीधा सीधा N2 का वैल्यू आ जाएगा यानी EB1 बाई EB2 इक्वल टू 51N1 अपॉन 52N2 कितना आ रहा है 16667 RPM। आप लोग भी सॉल्व करो और बताओ मुझे मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है ओके फाइन। अब दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है ये तो हो गया आपका जो सी पार्ट था वही। अब हम ए पार्ट में चलते हैं मतलब वो ऐसे लिखा गया था ये निकालिए जब फील्ड चेंज करेंगे तो पहले मैंने स्पीड निकाल लिया। फिर आते हैं टॉर्क तो टॉर्क के बारे में के फाई इंटू आई ए हाँ जी प्लस क्योंकि ई बी निकाल चुके हो राइट तो ई बी निकाल चुके हो तो टॉर्क ई बी आई ए बाई 2πn/60 भी लिख सकते हैं। हाँ जी सर तो कितना निकाला है ई बी ये वैल्यू कितना आया सर दोनों में से कौन सा यूज़ करें कोई सा भी यूज़ करो क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखो आप अगर ये वाला भी यूज़ करोगे करेक्ट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस 228.57 इंटू 107.14 अपॉन 2πn कितना है बाई 60 ये भी वही रिजल्ट देगा। और आप अगर चाहते हो नहीं ये वाला ई भी यूज़ करना है सर बिल्कुल कर सकते हैं नो प्रॉब्लम -75 इंटू 0.2 अपॉन करेक्ट ई बी इंटू 75 बाई कितना 2πn बाई 60 कितना आ रहा है ये भी अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा 140.4 कुछ आसपास आएगा और ये भी वही आता है 140.4। तो पॉइंट ये है सेम आंसर आएगा क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है तो ई बी बाई 2πn बाई ई बी आई ए बाई 2πn बाई 60 कर लो या ये ई बी आई ए बाई दोनों में से आंसर सेम आएगा अगर कैलकुलेशन करेक्ट है। ठीक है जी क्लियर है हाँ जी सर तो ये दोनों पार्ट हो गया हाँ जी। और डीसी मशीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए और ई बी इक्वल टू के फाई ओमेगा। हाँ माइक का लीड चेंज हुआ है चेक करके बताओ इज एवरीथिंग फाइन यस 140.25 राइट हरि प्रसाद यू आर करेक्ट। ठीक है हाँ अभी देखो तो नॉइज ठीक है यस यस अभिषेक चंदन अश्विनी हरि प्रसाद अरविंद ओके फाइन ओके। तो ये दोनों पार्ट हो गया एंड दिस इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ डीसी मशीन करेक्ट टॉर्क के फाई आई ए और ये आपका है ना ई बी के फाई ओमेगा। अब आगे बढ़ते हैं दैट इज एफिशिएंसी एंड लॉसेस। तो एफिशिएंसी एंड लॉसेस के लिए करेक्ट अगर हम बात करें आई होप इट इज़ फाइन अगर हम बात करें तो आ जाते हैं बताओ पावर। अभी पॉइंट इसमें क्या है जरा समझना जब फ्लक्स को रिड्यूस किया है देन दे आर आस्किंग अब बताइए एफिशिएंसी कितना होगा क्योंकि फ्लक्स रिड्यूस्ड केस में वी नीड टू कैलकुलेट दिस टॉर्क एंड एवरीथिंग। तो जो पहले वाला डेटा दिया गया है विद द हेल्प ऑफ दोज डेटा वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कांस्टेंट लॉस और फिर बाद में उसको हम यूज कर लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये तो आप जानते हैं ना व्हेनेवर टू डेटा इज देयर कई बार नो लोड पे दिया रहता है कई बार फुल लोड पे भी दिया है दैट्स फाइन बट वो डेटा से हम कांस्टेंट लॉस तो सेपरेट कर सकते हैं सो दैट दिस कांस्टेंट लॉस कैन बी यूज्ड इन द सेकंड केस आल्सो। ठीक है ओके चलो अब आ जाओ एफिशिएंसी के बारे में बात होगी। तो पावर इनपुट कितना होगा फुल लोड की अगर हम बात करें यानी पहले वाले केस में अगर हम बात करें
तो 250 इंटू 75 आर्मेचर करंट प्लस 1.5 डीसी यानी 19.125 किलोवाट। अब आ जाओ पावर आउटपुट। पावर आउटपुट कितना 15 किलोवाट। ठीक है, तो टोटल लॉस इज इक्वल टू 19.125 माइनस 15, हाउ मच इट इज, दैट इज 4.125। ठीक है, तो कांस्टेंट लॉस कितना, दिस कांस्टेंट लॉस हियर इंक्लूड्स शंट फील्ड कॉपर लॉस आल्सो। तो सीधे सीधे ये जो टोटल लॉस है इसमें से आर्मेचर कॉपर लॉस माइनस कर लो, दैट इज 4.125 माइनस 75 स्क्वायर इंटू 0.2 कितना आ गया 3 किलोवाट। तो दिस इज योर कांस्टेंट लॉस। अब नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस कांस्टेंट लॉस इन द एफिशिएंसी टर्म, तो आसान हो जाएगा। तो चलो अब ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये सिर्फ इसका हमने यूज किया है जस्ट टू कैलकुलेट कांस्टेंट लॉस। नाउ द पॉइंट इज एट रिड्यूस्ड फ्लक्स, जब फ्लक्स को रिड्यूस किया तो पहले बताओ आर्मेचर कॉपर लॉस कितना, आर्मेचर कॉपर लॉस दैट Ia2 स्क्वायर इंटू RA, Ia2 कितना है 107.14 का स्क्वायर इंटू 0.2, हाउ मच इट इज 2.3 किलोवाट। वेरी नाइस। तो टोटल लॉस कितना आ गया, अब नाउ टोटल लॉस इज 2.3 तो कॉपर लॉस प्लस कांस्टेंट लॉस तो कांस्टेंट रहता है, दिस कैन बी यूज्ड इन एनी सिचुएशन एनी केसेस, तो 5.3 किलोवाट। तो अब बताओ इस केस में पावर इनपुट कितना होगा, पावर इनपुट, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू 250 इंटू, नाउ द करंट हैज चेंज 107.14 प्लस फील्ड का कितना है 1.5, सो हाउ मच इट इज 27.16 किलोवाट। दिस इज पावर इनपुट एंड दिस इज योर टोटल लॉस, राइट। तो अब एफिशिएंसी क्या होता है, इनपुट माइनस लॉस अपॉन इनपुट, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 27.16 माइनस 5.3 अपॉन 27.16 इंटू 100, दिस इज योर आंसर। कितना आ रहा है देखो 80.5% आ रहा है। ठीक है, आप में से किसी ने सॉल्व किया, यस कौन है, सर्किटली योर्स। सर आशा चाची बोल रही थी कि पोटियर चाचा ने सेचुरेशन अरे याद है तुम्हें अभी तक, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो ऐसे ही भले ही हंसी मजाक करो जैसे करो, लेकिन चीज़ें अगर याद हो जा रही हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी देखो कितना चैलेंजिंग लग रहा होगा, चीज़ों को याद करने में डेटा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वेरी नाइस। फील्ड करंट विल बी कंसीडर्ड सेम, हाँ जी, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, पॉइंट ये है कि जैसे सिचुएशन हमने चेंज किया, ऐसा सिचुएशन है, तो अब जब उसके बारे में बोला नहीं गया है तो हम क्यों चेंज करें, उसको रखते हैं सेम। क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया पहला क्वेश्चन, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट। यस, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं सिलेबस भी कवर करूंगा और थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ताकि थोड़ा हटके है, डिफरेंट है, थोड़ा सोचने का, सिंपल है बट थोड़ा हटके होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, ये मुझे ठीक लगा था, 2 DC सीरीज मोटर रन्स एट 650 आरपीएम 750 आरपीएम, अलग अलग दोनों के बारे में बोला गया है। 2 DC सीरीज मोटर्स हैं सेपरेटली, एक 650 आरपीएम एक 750 आरपीएम, when taking a current of 60 ampere from a 600 volt, यानी कि both the motor separately taking 60 ampere from that 600 volt, तो एक 650 आरपीएम पे रन कर रहा है और दूसरा 750 आरपीएम पे रन कर रहा है। ठीक है जी, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ईच मशीन इज 0.3, ओके जी, टोटल रेसिस्टेंस जो भी आर्मेचर सीरीज सब मिला करके 0.3 दे दिया है ईच मशीन का। If the two motors are mechanically coupled and put in series across a 600 volt, अब क्या किया गया है, दोनों मोटर को मैकेनिकली कपल करके और 600 वोल्ट दे दिया गया है। ठीक है,
एट व्हाट स्पीड विल दे रन व्हेन स्टील टेकिंग ए करंट ऑफ 60 एम्पियर। अगर मान लीजिए बोल रहा है ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का बना है और मैकेनिकली कपल किया गया है, 600 वोल्ट अक्रॉस लगाया गया है, इफ दे आर टेकिंग 60 एम्पियर, तो बताइए वो कितना स्पीड पे रन कर रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है भी सिंपल। अच्छा, इन दैट क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कोई नया फार्मूला, अलग से कोई नया फार्मूला नहीं है, ठीक है। जितना बता दिया हूं क्लास में मोर देन सफिशिएंट है, राइट। उसी से सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा आपको केवीएल केसीएल और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और मशीन का कांस्टेंट वगैरह का इसमें यूज होगा। तो चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि हम सॉल्व करेंगे, आप भी साइड में सॉल्व करना। ओके फाइन, ले लिया। नाउ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इंडिविजुअली दे रखा है, थोड़ा डायग्राम मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। 600 वोल्ट है, हाँ जी, कितना आरपीएम, 650 आरपीएम है, मान लीजिए ये मशीन है, और व्हेन इट इज टेकिंग 60 एम्पियर, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस भी दे रखा है 0.3 ओम, ये एक मशीन हो गया। दूसरा भी उसके बारे में, इट इज ऑल्सो गिवन, करेक्ट, दैट इज अगेन if it is 600 volt and taking 60 ampere, again 0.3 ohm, तो ये कितना है स्पीड, 750 आरपीएम, राइट। तो अब इन दोनों को ये बोला गया है when the both are mechanically coupled, मतलब सिचुएशन कैसा रहा होगा जरा देखो। ठीक है, now the situation is like this, now here it is 600 volt और इधर से कितना ले रहा है करंट, 60 एम्पियर। अभी समझ में आ गया, यानी ये सिचुएशन था, इन दोनों को हमने प्लस करके ये बनाया है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है इसकी स्पीड अब कितनी होगी, राइट। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ दीज सेपरेट डेटा वी नीड टू फाइंड द मशीन कांस्टेंट, और कुछ ऐसा रिलेशन पता करना होगा ताकि हम वहां पे फिर यूज कर सके। तो चलिए ये डेटा से बताओ, तो EB1 क्या हो जाएगा, 600 माइनस 60 इंटू 0.3, 582, और इधर भी क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो दिस विल बी ऑल्सो सेम। कैन आई राइट हियर कि EB2 भी कितना आ जाएगा, 582, लिखते चलते हैं साथ साथ। अच्छा, नाउ 582 इज इक्वल टू K151 इंटू ओमेगा, तो 2 पाई और n बाई 60, तो यहां से K151 कितना आ जाएगा, हाउ मच, 8.55 यूनिट लिख देता हूं, नहीं भी याद रहे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वोल्ट सेकेंड अपॉन रेडियन, ठीक है। ये हमने यहां कैलकुलेट किया। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो EB2 K252 करके इसका कितना आ जाएगा, K252 7.41 वोल्ट सेकेंड पर रेडियन। तो ये तुम्हारा, ये दोनों मशीन के लिए सेपरेटली हमने कैलकुलेट कर लिया कि इनकेस हमें जब यूज करना होगा वहां पे तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट यूज करना ही होगा, क्यों, क्योंकि KVL KCL ही तो होता है, और क्या होता है डीसी मशीन में, राइट, इतना ही तो है। ओके, चलो कुछ देखना है इसमें से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज टेक दैट। ओके फाइन, चलो अब हम थोड़ा KVL खेलते हैं। तो वो KVL क्या कहता है हमें, यहां पे आ जाओ। ओवरऑल दिस 600 वोल्ट इज बेसिकली, क्या हम लिख सकते हैं इसको, V इज इक्वल टू EB1 प्लस EB2 और प्लस IA इंटू दोनों का ओवरऑल रेसिस्टेंस, यही है। अब EB1 को क्या लिखेंगे, K151 इंटू ओमेगा, K252 इंटू ओमेगा, कॉमन स्पीड आई एम टेकिंग, करेक्ट, प्लस 2IA RA मतलब ये ओवरऑल रेसिस्टेंस, ठीक है। ओके, चलिए जी, अब K151, ठीक है, प्लस K252 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस 2IA RA,
सिंपल केवीएल लगा रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखना कोई नया फॉर्मूला नहीं है, राइट। अब K1 ∅1 K2 ∅2 यहां से निकाला, ये हम रख देंगे, रख दीजिए सर। तो कितना हो जाएगा 8.55 प्लस 7.41 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 600 माइनस 2 इंटू 60 इंटू कितना है 0.3। तो यहां से ओमेगा हाउ मच यू आर गेटिंग, बताओ तो 35.34 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज योर ओमेगा, और फिर ओमेगा से एन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 337.5 आरपीएम। तो माय पॉइंट इज कुछ भी अलग नहीं होता है, कभी भी घबराना नहीं कि अरे ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, दो मशीन थे दोनों को कपल कर दिया, अरे कर दिया क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, केवीएल लगाओ आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसको देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, अब देखो अगेन क्वेश्चन सिंपल है, बट थोड़ा लैंग्वेज ऐसा चूज किया है मैंने कि आपको अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा अलग लगे, ठीक है। 250 किलोवाट एंड 750 किलोवाट 550 वोल्ट जनरेटर्स ऑपरेटेड इन पैरेलल डिलीवरिंग ए टोटल लोड ऑफ 1500 आरपीएम। तो यानी कि जो I1 प्लस I2 आ रहा है दैट इज 1500 आरपीएम। अच्छा, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द स्मॉलर मशीन इज 0.058 पर यूनिट। वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ है, लार्ज दूसरे का भी दिया हुआ है। एज्यूम द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ए स्ट्रेट लाइन, the effect of armature reaction is negligible, determine the current delivered by each machine and the terminal voltage। दो मशीन जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं, and the voltage regulation of both the machine is given, so now we need to calculate current delivered by each machine and the terminal voltage। very simple। तो एक तो ग्राफ से भी हो सकता है, बट मैं सिंपल तरीका बताता हूं कैसे इसको फटाफट सॉल्व करोगे। नाउ टेल मी इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप इज देयर। ठीक बात है, हाँ जी सर। सिमिलरली इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट विल गेट हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप इज देयर। यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब वो ड्रॉप अगर आ चुका है, ठीक है, वो ड्रॉप हमने निकाल लिया है कितना ड्रॉप है दोनों में इंडिविजुअली, तो उसी ड्रॉप और इस करंट की हेल्प से करेक्ट ड्रॉप पर यूनिट करंट भी निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, निकाल सकते हैं, और फिर उससे नई सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। जैसे थोड़ा सा मैं कर रहा हूं सॉल्व, फिर समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके फाइन, ठीक है। नाउ सी, देखो बोथ द मशीन्स आर देयर, मशीन 1 मशीन 2 दोनों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ मशीन 1 कितना हो जाएगा 0.058 इंटू 550, हाउ मच इट इज 31.9 वोल्ट। ठीक है जी। सिमिलरली सेम चीज अगर हम मशीन 2 के लिए निकालें तो 0.035 इंटू 550, हाउ मच इट इज 19.25 वोल्ट। ओके, अब पहले आउटपुट करंट निकाल लेते हैं। आउटपुट करंट ऑफ मशीन 1 कितना आ जाएगा, पावर इज गिवन ना 250 किलोवाट है ना, हाउ मच इट इज 454.55। ठीक है, इधर आ जाओ, आउटपुट करंट कितना हो जाएगा ऑफ मशीन 2
कितना, हाउ मच इट इज 1363.64 एम्पियर। तो हमने वोल्टेज ड्रॉप भी निकाला और करंट भी निकाला दोनों मशीन का। ठीक है सर, ये क्यों निकाला? इसका रीजन ये है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप पर आउटपुट करंट यानी कि पर यूनिट करंट से वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है वो रेशियो भी निकाल लेंगे। करेक्ट? तो कैन आई राइट हियर वोल्टेज ड्रॉप पर आउटपुट करंट कितना, 31.9 अपॉन हाउ मच, 454.55, हाउ मच इट इज 0.07 वोल्ट एम्पियर। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा, यही चीज अगर हम बात करें तो 19.25 अपॉन 1363.64 दैट इज 0.014 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों निकाला, इसकी जरूरत क्या थी, अभी बताऊंगा, बट आई होप इतना क्लियर है। दोनों ही मशीन का हमने वोल्टेज ड्रॉप, आउटपुट करंट और ड्रॉप पर यूनिट आउटपुट करंट भी हमने निकाल लिया फॉर बोथ द मशीन्स। अब हम इसका यूज करेंगे, मान लीजिए सपोज कि जो मशीन 1 है, या इसके नीचे ही लेके चलते हैं, इसके नीचे ही चलता हूं मैं। ठीक है, इधर हमारा मशीन 1 है, इधर हमारा मशीन 2 है। ठीक है, तो बताओ शेयर्ड करंट, मान लो इधर शेयर्ड करंट कितना है, सपोज IL1 है और इधर कितना है, IL2 है। तो और VT टर्मिनल वोल्टेज, कॉमन टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए कितना है, VT। ठीक है, ओके। तो बताओ क्या लिखेंगे हम, E1 इज इक्वल टू VT प्लस 0.07 यानी ड्रॉप पर यूनिट करंट इनटू करंट, यही तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप पर यूनिट करंट इनटू करंट, ये भी तो ड्रॉप ही है, वोल्टेज ही तो है, उसी को तो हमें ऐड करना है इस वोल्टेज में। हाँ जी सर। सिमिलरली E2 क्या होगा, ड्रॉप, ये हमारा VT प्लस ड्रॉप पर यूनिट करंट कितना 0.014 इंटू करंट IL2। हाँ जी सर। तो नाउ सी हियर, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे 550 इज इक्वल टू VT प्लस 0.07 इंटू IL1। सिमिलरली यहां पे भी 550 इज इक्वल टू VT प्लस 0.014 इंटू IL2। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गया होगा? हाँ जी सर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 550 ही है। हाँ जी, तो मान लीजिए सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन तो हमें पता ही है क्या है वो, IL1 प्लस IL2 कितना दिया हुआ है 1500, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर, सो आंसर विल बी IL1 इज इक्वल टू 250 एम्पियर, IL2 इज इक्वल टू 1250 एम्पियर एंड VT कितना आ गया, हाउ मच 532.5 वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका यूज समझ में आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा लेकिन बड़ा आसान है ये तरीका, जिससे कि फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन या कुछ दिया हो तो उसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, राइट? ओके फाइन। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने आई होप किया भी होगा, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं किया होगा, बट क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, क्या अच्छा क्वेश्चन है, वही टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन, लोड का दिया हुआ है और मशीन का डेटा दिया हुआ है, राइट? फाइंड द स्टेडी स्टेट स्पीड एट विच द मोटर विल ड्राइव द लोड एंड द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय इट फ्रॉम द सोर्स, और उस टाइम में करंट कितना होगा। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, फिर पैरेलली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू। नाम ऐसा लिखा है जनरल एसएसएस, समझ ही नहीं आ रहा। कोलकाता सेंटर से हैं, चलो। नहीं देखो, अभिषेक पूछ रहे हैं कि सर 550 कैसे लिया, वीटी 550 होगा। तो देखो पॉइंट यहाँ पे ये है, वीटी तो दे आर आस्किंग, अगर 550 वीटी होगा टर्मिनल वोल्टेज तो फिर पूछेंगे क्या हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो बेसिकली होता क्या है, जरा चलो फिर से उस क्वेश्चन में चलते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो जैसे 550 वोल्ट जनरेटर ऑपरेटेड इन पैरेलल, जब ऐसे दिया रहता है ना इतना किलोवाट 550 वोल्ट जनरेटर ऑपरेटेड इन पैरेलल, करेक्ट। तो ठीक है, जनरली जो हम सॉल्व करते हैं उसके इसमें हम क्या लेते हैं उसको कि टर्मिनल वोल्टेज होगा सर, एकदम ठीक बात है, करेक्ट है। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे समझना, ये बोल क्या रहा है कि अब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो टर्मिनल वोल्टेज बताइए, तो इसका मतलब इसको क्या कंसीडर करोगे, 550 वोल्ट को, उसको नो लोड वोल्टेज कंसीडर करोगे ना। फिर से समझना, जनरली जो वोल्टेज दिया रहता है वो टर्मिनल वोल्टेज या फुल लोड वोल्टेज ही होता है, यू आर राइट अभिषेक। बट पॉइंट यहां पे ये है कि टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, करेक्ट। तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं तो थोड़ा और क्लियर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे पैरेलल में दो मशीन को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, चाहे डीसी सिंक्रोनस कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ग्राफ आएगा एक का, दूसरा मान लो इधर ड्रॉ करूंगा, ऐसा आएगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर मान लो इधर वोल्टेज एक्सिस है तो ये तुमसे पूछ रहा है कि ये कॉमन वोल्टेज कौन सा होगा। तो यहां पे जो वोल्टेज लोगे ये तो सेम ही लेके चलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ये कैसे निकालोगे, समझ में आया ना, ठीक है। चलिए इसको जरा कर रहे हैं सॉल्व, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। कहीं तो एक बार सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये आ रखा है, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं, इक्वेट करना है, दोनों दो तरह से टॉर्क निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो बताओ लोड टॉर्क कितना है, 500 माइनस 10 ओमेगा, यहां पे ओमेगा कितना है 2 पाई एन बाय 60, यानी कि पाई बाय 30 इंटू 250 कितना आ रहा है ये 26.18 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ईबी हाउ मच, ईबी आ जाएगा 230 माइनस 100 इंटू 0.05 225 वोल्ट। तो ईबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, योर के फाई ओमेगा लिख लीजिए, राइट। तो के फाई को एक नया कांस्टेंट के दे दीजिए इंटू ओमेगा, तो यहां से ये के कितना आ जाएगा ईबी बाय ओमेगा दैट इज 225.26.18, ये आ रहा है 8.6 वोल्ट सेकेंड पर रेडियन, ठीक है। ये कांस्टेंट निकाल लिया हमने विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा जो भी दिया है। अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर होगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, इन स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या लिखते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल टॉर्क है वो लोड टॉर्क को काउंटर करेगा, बोथ आर सेम, यस। अब दो तरह से निकाल करके इक्वेट करो, एक तो गिवन ही है, दिस इज गिवन ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क के फाई ओमेगा होता है, के फाई की वैल्यू पता है, इंटू ओमेगा कर दो, बस सॉल्व हो गया। मतलब ये 500 माइनस 10 ओमेगा दैट इज इक्वल टू दिस के फाई 8.6 इंटू आई ए क्या हो जाएगा, हाँ टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए, के फाई ओमेगा नहीं, ईबी के फाई ओमेगा होता है ना, हाँ आई ए। तो 230 माइनस 8.6 इंटू कितना दे रखा है ये
K5 IA निकालना है ना, हाउ मच कितना आ रहा है ये, EB के जगह मैंने 8.6 ओमेगा रखा है, ठीक है, समझना V माइनस EB बाय RA लिखते हो ना, व्हाट आई हैव रिटन V माइनस EB के जगह 8.6 ओमेगा, सो दैट दिस विल बी इक्वेशन इन ओमेगा, ठीक है। तो हाउ मच ओमेगा यू आर गेटिंग, यहां से सॉल्व करके 26.59 रेडियन पर सेकेंड। सो नाउ व्हाट इज N, N इज 254 RPM, राइट। तो करंट कितना हो जाएगा, ये तो स्पीड आ गया, नाउ द करंट इज 500 माइनस कितना, सपोज 10 ओमेगा बाई के, हाँ जी, तो इसको रख दो सारी वैल्यू, 27.22 एम्पियर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं था, बस ये K5 या K का वैल्यू निकालो और उधर रख दो, दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दो, यही कॉन्सेप्ट था। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा ट्रिकी था ये, ठीक है। तो गेट क्या करता है, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, कुछ भी नया फॉर्मूला नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बस उसको यूज कैसे करना है वो चीज आना चाहिए, ठीक है। इसको देख लो, लिख लो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ठीक है, देखो, a 220 volt 25 kilowatt DC shunt motor running at its rated speed of 1500 rpm is to be braked by plugging। तो यानी एक ब्रेकिंग का भी मैंने क्वेश्चन ले लिया, प्लगिंग का क्वेश्चन है ये। प्लगिंग जानते ही हो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज को टर्मिनल को इंटरचेंज कर दो, तो EB प्लस V हो जाता है और दोनों मिलकर के एनर्जी डिसिपेट करने लग जाते हैं, किसमें, आर्मेचर रेसिस्टेंस में, और कोई जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करोगे उसमें, ये तो याद होगा, ठीक है। Now the armature resistance is this much and the efficiency is this much, neglect saturation, determine the external resistance required in series with the armature to limit the initial braking current to twice the full load value, initial braking torque and its value when the speed has fallen to 500 rpm। Again बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्रेकिंग का, बिकॉज इट इज हैविंग 3 पार्ट्स, तो ये तो फटाफट आ ही जाता है, फिर ये भी कैलकुलेट करना है और लास्ट पार्ट में भी थोड़ा कुछ तो है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ओके फाइन, ठीक है, चलें सॉल्व करें, कर रहे हो आप लोग, ट्राई कर रहे हो, चलो देखते हैं। सी टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, क्योंकि इसको EV में ऐड करना है हमें। RA इज गिवन 0.3 ओम, आउटपुट फुल लोड आउटपुट कितना है, 25 किलोवाट, ठीक है, फुल लोड। अच्छा, फुल लोड स्पीड कितना दे रखा है, 1500 RPM। वाई आई एम राइटिंग, बिकॉज एक डिफरेंट स्पीड पे भी फिर पूछा है सी पार्ट में, देखोगे क्वेश्चन में। तो चलो कोई नहीं, पहले स्टार्टिंग वाला पार्ट वी विल डू। IA1 कितना है, P0 अपॉन एफिशिएंसी इनटू V, मतलब इनपुट बाय वोल्टेज, तो आउटपुट बाय एफिशिएंसी इनपुट हो जाएगा ना, बिकॉज एफिशिएंसी इज आल्सो गिवन। तो 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.85 इंटू 220, हाउ मच, 133.7 एम्पियर, ये पार्ट हो गया। नाउ इलेक्ट्रिकल टॉर्क इस टाइम में कितना होगा, सपोज दिस इज T1, हाउ मच, तो 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 157.08, हाउ मच, 159.155, इतना न्यूटन मीटर आ गया। और EB1 कितना हो जाएगा, 220 माइनस 133.7 इंटू 0.3, 179.9 वोल्ट। ये पार्ट हमारा हो गया।
जो स्टार्टिंग में डेटा गिवन है उसका हमने यूज कर लिया। नाउ कम टू क्वेश्चन, ब्रेकिंग जब करेंगे तब। तो क्या दे रखा है ए पार्ट में कि 2 टाइम्स फुल लोड करंट, द फुल लोड करंट इज हाउ मच, दैट इज 133.7। तो यानी कि जो प्लगिंग करंट है या ब्रेकिंग करंट कह लीजिए वो 2 टाइम्स ऑफ 133.7 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ब्रेकिंग करंट हमारा कितना, 2 इंटू 133.7 दैट इज 267.4 एम्पियर। अच्छा जी, तो क्या लिखें, तो IA2 इंटू RA प्लस R एक्सटर्नल इज इक्वल टू V प्लस EB, ये तो पता ही है दोनों वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, 179.9 प्लस वोल्टेज कितना 220, तो हाउ मच इट इज 399.9। ठीक है, तो RA प्लस R एक्सटर्नल ये कितना हो जाएगा, दैट इज 399.9 अपॉन 267.4, क्योंकि करंट शुड नॉट एक्सीड दिस मच। ठीक है, कितना आ गया ये 1.5। तो आर एक्सटर्नल हाउ मच, आर एक्सटर्नल हाउ मच 1.20। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ गया, ये तो आप समझ गए होंगे, इजीली आ जाएगा। नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में बोल रहा है वो ब्रेकिंग टॉर्क भी बताओ। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे, तो अगेन टॉर्क इज इक्वल टू K phi IA। तो करंट अगर 2 टाइम्स हो गया तो टॉर्क भी 2 टाइम्स हो जाएगा, वेरी सिंपल, क्योंकि फ्लक्स तो इंडिपेंडेंट है, राइट। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेते रहना, है ना। ठीक है, चलिए तो बी पार्ट में आ जाओ कि टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA। तो क्या लिखेंगे, IA2 इज इक्वल टू 2IA1, तो TB2 इज इक्वल टू 2TA1, तो 2 इंटू 159.155 कितना आ जाएगा 318.31 न्यूटन मीटर। अब सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, करेक्ट, ये तो हो गया। जब स्पीड, देखो क्या होता है, वेन एवर यू आर गोइंग टू जस्ट चेंज द सप्लाई टर्मिनल, तो ये जो पावर अब डेवलप हो रहा है वो कहां से आ रहा है, नो डाउट वो मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑफ कोर्स एट द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी द पावर सप्लाई इज गोइंग ऑन, सो स्पीड विल डिक्रीज। तो अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये 500 आरपीएम पे आ जाती है स्पीड, तब बताओ कि टॉर्क वगैरह कितना होगा। ठीक है, चलो इतना पार्ट तो समझ में आ गया, ये तो आसान था। हाँ जी सर, वैसे तो सभी आसान है बट फिर भी ओके। नाउ चलिए जरा उस टाइम में EB देखते हैं पहले कितना होता है। ठीक है, तो क्या लिखा जाए, EB1 EB2 अप इज इक्वल टू N1 बाय N2। तो यहां से EB2 कितना 500 बाय 1500 इंटू 179.9, ये कितना आ गया 60 वोल्ट। अब ब्रेकिंग करंट, ठीक है, कितना आ जाएगा EB2 प्लस B उस टाइम में जब हमारा वोल्टेज EB2 कितना है 60 है, 1.5, तो 220 प्लस 60 यूज कर रहा हूं EB, याद रखना। वाई आई एम यूजिंग 60, बिकॉज जब स्पीड कम हो रही है तो ऑफ कोर्स EB भी कम होगा, और उस पर्टिकुलर स्पीड यानी उस पर्टिकुलर EB पे नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट। तो कितना हो जाएगा, हाउ मच 186.7 एम्पियर। तो अब सीधी सी बात है, ब्रेकिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट आ चुका है, करेक्ट। तो क्या लिखोगे, TB2 इज इक्वल टू IA2 बाय IA1 इंटू TB1। IA2 कितना है 186.7 अपॉन 133.7 इंटू 159.155, हाउ मच इट इज 222.2 न्यूटन मीटर। आई होप इट इज क्लियर। तो यानी उस रिड्यूस्ड स्पीड पे EB निकाला, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट EB यू नीड टू कैलकुलेट द न्यू करंट, और जब न्यू करंट आ गया तो फिर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट करके टॉर्क आ जाएगा। प्लीज राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी। हो गया, ये लिख लिया। थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, एक जो नॉर्मल पैटर्न होता है उस पे तो क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर सारे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा मैंने अलग रखा है कि थोड़ा दिमाग यूज हो, ठीक है। बाकी देखो, नॉट ए सिंगल फॉर्मूला इज यूज्ड, करेक्ट, विच इज नॉट टॉट इन क्लास। सब कुछ वही यूज कर रहे हैं जो हमने पढ़ रखा है, बस उसका एप्लीकेशन कैसे करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर है, रन्स एट 1100 आरपीएम, टेकिंग 90 एम्पियर, फेड फ्रॉम 110 वोल्ट सप्लाई। व्हाट रेसिस्टेंस वुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फील्ड सर्किट, मतलब वो डाइवर्टर रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये डीसी सीरीज मशीन है, तो बोल रहा है इसके पैरेलल में कितना रेसिस्टेंस ऐड कर दें। बेसिकली किसकी बात हो रही है, डाइवर्टर रेसिस्टेंस की बात। बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू कनेक्ट डाइवर्टर रेसिस्टेंस, the current will be diverted into it and the flux is going to be affected, and as flux is affected, speed will be affected, right? तो 1500 for delivering the same load torque, अब अच्छा ये भी बोल दिया है 1500 आरपीएम हो जाए और delivering the same load torque, आर्मेचर रेसिस्टेंस गिवन है, सीरीज रेसिस्टेंस गिवन है, एज्यूम दैट मैग्नेटिक सर्किट इज अनसैचुरेटेड, मतलब 5 प्रोपोर्शनल टू IA हम ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब लोग ट्राई कीजिए। राइट, कर रहे हैं ट्राई। ठीक है, इवन इस क्वेश्चन को मेंस के लिए भी मार्क कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सिंपल है बट अगर कैलकुलेशन सही नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। सो नाउ इट इज, डेटा लिख लेते हैं पहले। 110 वोल्ट, करंट कितना है 90 एम्पियर, RA 0.08 ओम, सीरीज रेसिस्टेंस 0.06 ओम, N1 कितना है स्पीड 1100 आरपीएम, और N2 इज ऑल्सो गिवन 1500 आरपीएम, ठीक है। ओके जी, अब इक्वेशन से लिखते चले जाते हैं। EB1 कितना लिखोगे 110 माइनस 90 इंटू 0.08 प्लस 0.06, 97.4 वोल्ट। नाउ कम टू द EB2, 110 माइनस 0.08 इंटू IA2 प्लस 0.06 इंटू I सीरीज 2, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ EB प्रोपोर्शनल टू phi n, हाँ जी सर, अच्छा। और क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट बोला है क्या है, मतलब अनसैचुरेटेड है, तो 5 प्रोपोर्शनल टू IA यूज करते हैं हम लोग सीरीज मशीन में, राइट। तो EB1 बाई EB2 कितना हो जाएगा,
आई सीरीज 1 N1 बाई आई सीरीज 2 N2, राइट। तो कितना हो जाएगा, IA1 बाई आई सीरीज 2 इंटू N1 बाई N2। सी यहाँ पे आई सीरीज 2 ही रहने दिया है, इधर आई सीरीज 1 आई हैव रिटेन IA1। क्यों, क्योंकि उस केस में सेम है, जब डाइवर्टर यूज करोगे तो सीरीज वाला करंट अलग होगा, आर्मेचर करंट, ठीक है। तो नया वाला कुछ और भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये लिख देता हूं मैं कि जो आई सीरीज 1 है वो IA1, वो सेम ही है, तो हम सेम लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, नाउ लिसन हियर, EB2 कितना हो जाएगा, आई सीरीज 2 बाई 90 इंटू 1500 अपॉन 1100 इंटू 97.4, 1.476 इंटू आई सीरीज, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, मान लीजिए। EB2 के दो इक्वेशन बनाए हमने, एक तो KVL लिख करके और दूसरा ये रिलेशन यूज करके। ओके फाइन। अच्छा, अब चलते हैं टॉर्क के पास। तो लोड टॉर्क इज इक्वल टू हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई IA, हाँ जी, और प्रोपोर्शनल टू आई सीरीज इंटू IA भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्या है, सीरीज करंट के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये क्या है, रीमेन्स सेम बोल रहा है, टॉर्क रीमेन्स सेम। तो यहां से आई सीरीज 2 कितना हो जाएगा, आई सीरीज 1 इंटू IA1 अपॉन IA2। तो कितना हो जाएगा, IA1 स्क्वायर अपॉन IA2, दैट इज 90 का स्क्वायर अपॉन IA2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो यहां आई सीरीज 2 और IA2 में एक रिलेशन आ गया, और EB2 के दो रिलेशन ऑलरेडी हैं, जिसमें IA2 और आई सीरीज 2 के एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे आगे क्या करना है। 2 अननोन्स आर देयर, आई सीरीज 2 और IA2, और इन दोनों को मिला करके एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर इसके साथ सॉल्व कर देंगे उसको, राइट, ठीक है। तो फ्रॉम 3 and 1, 3 और 1 को एक साथ रख लेते हैं, मीन्स आई सीरीज 2 के जगह वो रख सकते हैं। तो EB2 कितना हो जाएगा, 110 माइनस 0.08 इंटू IA2 प्लस 0.06 इंटू आई सीरीज 2, ठीक है। नाउ अब इस आई सीरीज 2 के जगह मैं ये रखने जा रहा हूं, राइट। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं सॉल्व करके, ये हो जाएगा माइनस 0.08 इंटू IA2 प्लस 486 अपॉन IA2, करेक्ट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 2 और 4 को एक साथ सॉल्व कर देंगे, मतलब ओवरऑल 1 2 3 को यूज करके हमें सॉल्व करना है, आई सीरीज 2 और IA2 पता करना है। तो 2 और 4 को एक साथ ले लेंगे। तो EB2 इज इक्वल टू 110 माइनस 0.08 IA2 प्लस 486 बाय IA2, करेक्ट, that is equal to 1.476 into I series 2, यानी 1.476 into 90 स्क्वायर बाई IA2, तो 11955.6 अपॉन IA2, राइट। तो ये पार्ट हो गई, ठीक है। अब इनको रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करेंगे। तो रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक बनाओ और उसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है। थोड़ा सा ये मेंस टाइप का क्वेश्चन हो गया, बट मैं डिफरेंट रखने के लिए थोड़ा, कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो फटाफट कैसे सोचोगे।
तो IA2 हाउ मच, ठीक है, दिस इज योर IA2। तो I सीरीज 2 कितना हो जाएगा, राइट। अब पैरेलल जो करंट डिवीजन होता है वो लगा दो, मीन्स I सीरीज 2 बाय IA2, बिकॉज यू नो ऑलरेडी जब डाइवर्टर आप लगाओगे, ठीक है, तो बेसिकली है ना करंट डिवीजन तो लगा ही सकते हैं ना। तो हाउ मच इट इज, $0.5238। तो इसको सॉल्व करके देखो RD कितना आ रहा है, 0.066। दिस इज योर आंसर। तो पॉइंट ये है, अगेन इन दिस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कोई भी, जैसे मैं कहता हूं रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी अलग फार्मूला यूज नहीं हुआ, वही KVL KCL हम करते जा रहे हैं, राइट, सारे रिलेशन वही है, करेक्ट। थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूं। अभी देखोगे स्टेप्स आर सेम, राइट। EV1 EV2 लिखा, फिर EV और IA ओमेगा का रिलेशन से एक EV2 लिखा, राइट, और यही रिलेशन जो यहां से लिखा हमने एक टॉर्क से 1 2 3, इनकी हेल्प से हमने IA2 और ISC2 के कैलकुलेट किया है, वेरी सिंपल। फिर करंट डिवीजन लगा दिया उधर लास्ट में, राइट, ओके। चलें आगे बढ़े। ठीक है, कभी देखना हो इसीलिए एक बार। आ जाइए नेक्स्ट। ये डीसी मशीन का अगेन ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर सिंक्रोनस में चलेंगे। डीसी 4 पोल सीरीज वाउंड फैन मोटर रन्स नॉर्मली एट 600 RPM दिया हुआ है। द फील्ड कॉइल्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। एस्टिमेट द स्पीड एट द करंट टेकन बाय द मोटर इफ द कॉइल आर रिकनेक्टेड इन 2 पैरेलल ग्रुप। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि फील्ड जो पैरेललिंग फील्ड कॉन्सेप्ट था वो लगा रहे हैं। अब उसका डेरिवेशन जब क्लास में बताया था बहुत लंबे चौड़े होते, बट मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था कि इस क्वेश्चन को वो जो ट्रेडिशनल वे होता है वो वैसे सॉल्व नहीं करना, समय लगेगा। सीधा सीधा जो N2 बाय N1 एक रिलेशन और I2 बाय I1 एक रिलेशन दिया था उसमें रखो और सीधे सीधे आंसर आएगा। जैसे क्या रिलेशन था बताओ, यही लिख देते हैं। सी अगर T प्रोपोर्शनल टू N टू द पावर X गिवन होगा तो क्या बोला था मैंने, N2 बाई N1 इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन से ही आता है ऑलरेडी, ऑल द जस्ट डू ऑल द डेरिवेशन, सब कुछ उसी से आता है, बताया था मैंने आपको। और फिर IA2 बाई IA1 कितना, 2 टू द पावर X प्लस 1 बाई X प्लस 2। तो इन दोनों रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो बताओ अब इस क्वेश्चन में टेल मी व्हाट इज द रिलेशन गिवन। तो क्या दिया हुआ है रिलेशन, द लोड टॉर्क इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो यानी कि क्वेश्चन में लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अपने डेरिवेशन के हिसाब से x कितना है, 2 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या लिखूं, N2 इज इक्वल टू N1 दैट इज 600 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली IA2 कितना हो जाएगा, IA1 कितना 20 एम्पियर, राइट, इंटू 2 टू द पावर कितना 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 2। बता दो जल्दी से कितना आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 714 RPM आएगा और ये कितना आ रहा है 33.63
एम्पियर। तो माई पॉइंट इज डोंट अप्लाई दैट ट्रेडिशनल अप्रोच, आप इसको अप्लाई करना और फटाफट सॉल्व करना, क्योंकि समय नहीं होता एग्जाम में, ठीक है ना। ओके फाइन। सो जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला जो क्लास में दिया हूं मैं, तो टाइम बचता है वहां पे, नहीं तो वो करते रह जाओगे IA/2 प्रोपोर्शनल टू IA1 वगैरह वगैरह, बहुत टाइम लगता है। तो इसको अप्लाई कीजिए। ऋषभ सन्नाटा ऋषभ। अब क्वेश्चन किए कि नहीं ये बताओ, खाली मजे ही कर रहे हो या क्वेश्चन भी कर रहे हो? नहीं देखो, जॉय बोल रहा है डीसी मशीन में इतना धांसू है, तो उसने देखो ऐसा नहीं है। मैंने व्हाट आई हैव ट्राइड, जस्ट आई वांट टू कीप दिस क्वेश्चन लेवल नियर अबाउट योर गेट एग्जामिनेशन। तो इसी टाइप के गेट में क्वेश्चन आएंगे, वही मैंने कोशिश किया है, टफ नहीं रखा है, ठीक है। हाँ एक आध वहां भी आते हैं लेंदी, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, तो वो भी था, ठीक है। चलो तो अब हम सिंक्रोनस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके अब इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना, जो भी हम लगाते हैं 4.445 टर्न फेज वाला, पहला वही क्वेश्चन लेना है, राइट। बट इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिया है, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स डेंसिटी इज 30% ऑफ द फंड, मतलब थोड़ा सा थर्ड हार्मोनिक को भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। यानी फंडामेंटल के साथ साथ अगर थर्ड हार्मोनिक भी फ्लक्स रहता है तो आप कैसे सोचोगे, ठीक है, वो चीज रखा है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और देखो, ट्राई करो। ओके, थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स डेंसिटी इज 30% ऑफ द फंडामेंटल फ्लक्स डेंसिटी, है ना, डेंसिटी लिखा है यहां पे। चले सॉल्व करें, आ जाइए। तो अब देखो इन दिस क्वेश्चन, राइट, पहली बात तो फाई को क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो कितना फाई कितना दे रखा है जरा देखो तो क्वेश्चन में, एट कंडक्टर एंड द कंडक्टर ऑफ ईच फेजेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, पिच ऑफ कॉइल दिया है, डिटरमाइन द फेज एंड लाइनिंग ऑफ द टोटल फ्लक्स पर पोल इज 56, ठीक है। तो 56 मिली वेबर टोटल फ्लक्स दे रखा है, और इस 56 मिली वेबर में फाई 1 भी है और फाई 3 भी है, समझ में आ रहा है? कितना फाई 1 कितना फाई 3 ये नहीं दिया है, ये दिया हुआ है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी यानी BM, बी की बात हो रही है, तो वो जो है वो 30% ऑफ द फंडामेंटल है, थर्ड वाले का जो बी है, यानी B3 जो है वो 30% ऑफ B1 है, ठीक है, क्लियर है। और दोनों का सम कितना दे रखा है, दैट इज 56 मिली वेबर। तो इसको समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया, बाकी तो सब रख दोगे फॉर्मूला में आ जाएगा, राइट। चलिए जी देखते हैं। नाउ पहली बात बताओ, जो फाई का रिलेशन हम लिखते हैं, फाई होता क्या है, जैसे फाई में बी के टर्म में बताओ, बी के टर्म में क्या लिखोगे, तो सर 2/पाई BM मतलब एवरेज, है ना, इनटू पाई DL/P, इफ यू कैन रिमेंबर, याद हो अगर आपको, मैंने कहा था BM जब इंट्रोड्यूस करे तो ये वाला दिमाग में रखना, यानी कि फाई एवरेज इज इक्वल टू बी एवरेज डॉट DS, और DS में पाई DL और अपॉन P, यानी क्योंकि ये एवरेज फ्लक्स पर पोल होता है तो पोल भी लिखते हैं। हाँ जी सर ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ इस रिलेशन से फाई 1 क्या होगा, फंडामेंटल वाला, तो सर 2/पाई BM1 इंटू पाई DL/P
P लिख देंगे, ठीक है। और अगर मैं पूछूंगा आपसे फाई 3 क्या होगा, तो कहोगे सर 2/π BM3, करेक्ट, पीक वैल्यू ऑफ द थर्ड हार्मोनिक्स फ्लक्स, पाई DL। और पोल क्या हो जाता है बताया था, यहां पे P है तो यहां पे 3P, इफ यू कैन रिमेंबर, याद है। जो स्पेस हार्मोनिक्स होते हैं नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देते हैं, बताया था ना। अच्छा, तो ये फाई 1 फाई 3 आ गया, दोनों में रिलेशन। और वी नो BM1 और BM3 का भी रिलेशन हमें पता है, ठीक है सर। तो बताओ फाई 1 बाई फाई 3 अगर मैं करूंगा, ये रेशियो लूंगा, तो क्या आ जाएगा 3 BM1 अपॉन BM3, ठीक है, क्योंकि पोल ऊपर चला जाएगा ना जब नीचे रखो, मतलब फाई 1 बाई फाई 3 कर दो इन दोनों में, तो यही आएगा रिलेशन। तो कितना हो जाएगा 3 BM1 बाय 0.3 BM1, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ गया बताओ, फाई 1 इज इक्वल टू 10 फाई 3। इनफैक्ट मैं बताऊं, एक ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरह से डेटा दिया रहे अगर, और आपसे पूछ ले कि बताइए जो फ्लक्स होगा पर पोल, वो दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो वो कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया। तो ये भी अपने आप में एक डिस्कशन हो सकता है। अच्छा लगा था मुझे ये क्वेश्चन में, इसलिए मैंने रखा। आई होप यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट, ठीक है। तो दोनों का रेशियो पता चल गया, हाँ जी। और दोनों का सम कितना दे रखा है 56। अच्छा सर, दोनों का सम हाउ मच इट इज गिवन, तो फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 3, हाँ जी। तो 10 फाई 3 प्लस फाई 3 कितना हो जाएगा 11 फाई 3, और वो कितना है दैट इज 56 मिलीवेबर में है। तो फाई 3 कितना हो जाएगा 56 बाय 11 दैट इज 5.091 मिली वेबर, ये फाई 3 आ गया। तो फाई 1 कितना होगा, ऑफ कोर्स इसका 10 टाइम्स, तो 50.91 मिली वेबर, ठीक है। तो फाई 1 फाई 3 की वैल्यू आ चुकी है, हाँ जी। अब आप दोनों सेपरेटली कर लो डिस्कशन, मींस E1 कितना है, E3 कितना है, अब तो कर लोगे ना। तो अभी तक जो मैंने समझाया, अगेन आई रिपीट, ये थोड़ा अपने आप में क्या है, यूनिक डिस्कशन है। इसको समझना ट्राई करो समझने का, कि व्हेन दे हैव गिवन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और इस तरह से डेटा दिया रहे, तो कैसे आप फाई 1 और फाई 3 को सेपरेट करोगे। अगेन क्लास में बताया है, बट अप्लाई करना आना चाहिए। तो थ्रू दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लर्न दैट। चलिए, इतनी बात हो गई, हाँ जी सर। अब आगे बढ़े, यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, चलो वो तो 12 है ही, ठीक है। तो बीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, स्लॉट्स पर पोल बताओ कितना 120/10 यानी कि 12। तो बीटा कितना हो जाएगा 180 बाय स्लॉट पर पोल दैट इज 15 डिग्री। तो KD1 कितना होगा फंडामेंटल का, अब ये सब तो कर लोगे ना फटाफट कैलकुलेट, m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, कितना आ रहा है 0.958। अच्छा, KD3 कितना होगा थर्ड हार्मोनिक के लिए, दैट इज साइन ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 15 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन एम बीटा mn बीटा बाई 2 अपॉन m इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2। मीन्स हार्मोनिक से क्या होता है, एंगल में मल्टीप्लाई होता है। ये सब बता चुका हूं ऑलरेडी क्लास में, ठीक है। अब आ जाइए, KP1 कितना हो जाएगा, KP1 क्योंकि 5/6 है, 5/6 इंटू 180 डिग्री कर दो, मीन्स क्वाइल पिच। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्वाइल पिच कितना होगा, तो 5/6 दे रखा है, मतलब 5/6 ऑफ 180 कर दीजिए, यानी कि 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और अल्फा कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, राइट। तो KP1 कितना कॉस ऑफ 30/2 कितना आ जाएगा 0.966। तो
व्हाट इज Kw1, दोनों का वाइंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली Kp3 कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ n अल्फा बाई 2, यानी कि 3 इंटू कितना 30 डिग्री बाय 2, ये कितना आ रहा है 0.7071। ठीक है, तो Kd1 Kp1 ये आ चुका है। ओके, तो व्हाट इज वाइंडिंग फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 0.9254, और यहां भी कितना आ जाएगा वाइंडिंग फैक्टर Kw3 0.462। तो ये आ गया। अब फॉर्मूले लगा दो। नंबर ऑफ कंडक्टर पहले देख लेते हैं, तो टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे 120 इंटू 8 960, तो टर्न्स पर फेज कितना 960 बाई 2, कंडक्टर बाई 2 टोटल टर्न्स, और डिवाइडेड बाई 3, तो पर फेज कितना 160। तो बताओ ई फेज फंडामेंटल का बताओ पहले कितना आ रहा है, फंडामेंटल 1 लिखा है मैंने, 4.44 इंटू 50.91, ठीक है, हाउ मच इट इज 1672.7 वोल्ट। सिमिलरली व्हाट इज ई फेज 3 4.44, अब उसका फ्लक्स यूज करेंगे 5.3 कितना है 5.091 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 50, आई होप NF समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी भी 3 टाइम्स इंटू 160 इंटू 0.462। देखो EMF क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में क्या होता है, हार्मोनिक्स क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, समझना। स्पेस में बात करेंगे तो पोल्स बढ़ाता है, और अगर हम टाइम में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, इसीलिए 3 इंटू 50 लिखा है, और उसका 5.3 लिखा है, इसका 5.1 लिखा है, जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। तो ये कितना आ रहा है 250.63 वोल्ट। तो फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक पर फेज वोल्टेज आ चुका है। अब अगर मैं फेज वोल्टेज बोलूंगा टोटल, फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, ई फेज 1 फंडामेंटल का स्क्वायर और ई फेज 3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट, सीधे आंसर लिख देता हूं, ऑलरेडी आई हैव 1691.37। अब अगर पूछेगा आपसे कि लाइन में बताओ कितना होगा, लाइन में, तो लाइन में ई फेज जो ये निकाला है इसका √3 टाइम्स मत करना, नो 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 नो, ठीक है, ये फेज में होगा, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक फेज में तो होता है, इसीलिए वी हैव टू कंसीडर इट, बट वो लाइन में नहीं होता, इसीलिए लाइन वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा √3 ई फेज 1, ठीक है। तो लाइन में थर्ड हार्मोनिक को मत लेके जाना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2897.2 वोल्ट। तो अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, यहां पे भी एक मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो फेज में यस थर्ड हार्मोनिक को रखना है हमें, बट लाइन में थर्ड हार्मोनिक नहीं होगा तो उसको मत लेना। तो दिस इज आवर आंसर। ओके फाइन। वन 1691 एंड 2897, हाँ यस यदन्या करेक्ट, वेरी नाइस।
राइट, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ओके। अब तुम्हें तो पता ही है, क्वेश्चन तो इस पे होना ही चाहिए, राइट। देखो, नाउ लिसन, ओसी टेस्ट, एससी टेस्ट दे हैव गिवन एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस दे आर आस्किंग कि रेजिस्टेंस इज गिवन, तो हाउ मच। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपको, पहले मैं कॉन्सेप्ट देखो, ये क्वेश्चन तो जस्ट इन 1 मिनट यू आर गोइंग टू सॉल्व, बट कॉन्सेप्ट क्या बताया था जरा ध्यान से सुनना, एक बार बोल देता हूं। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, सपोज ये हमारा ओसीसी है, तो वन इज एक्चुअल एयर गैप लाइन और दूसरा क्या था, द सेकेंड वाज मॉडिफाइड एयर गैप लाइन, ठीक है, द सेकेंड वाज मॉडिफाइड एयर गैप लाइन जो इस वोल्टेज से जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अगर ZS अनसेचुरेटेड की बात करेंगे, अनसेचुरेटेड जनरली नहीं पूछते, अगर पूछेंगे तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक रेशियो ऑफ दिस वोल्टेज और करस्पॉन्डिंग शॉर्ट सर्किट करंट। मान लीजिए दिस इज योर शॉर्ट सर्किट करंट, सपोज ये शॉर्ट सर्किट करंट का लाइन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। तो वोल्टेज और करस्पॉन्डिंग शॉर्ट सर्किट कोई सा भी ले लो, बट एक्चुअल एयर गैप लाइन पे। बट अगर सेचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात करेंगे तो जनरली क्या करते हैं, यू हैव टू टेक दिस रेटेड वोल्टेज एंड करस्पॉन्डिंग दिस शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। ये सेचुरेटेड के लिए, और अनसेचुरेटेड के लिए तो आप कोई भी वोल्टेज करंट ले सकते हो ऑन एक्चुअल एयर गैप लाइन और आईसीसी का करंट, ठीक है। तो यहां पे ओसी टेस्ट गिवन है, एससी टेस्ट गिवन, ये सब कुछ भी नहीं दिया है कि क्या पूछ रहा है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, क्या नाटक है, प्लस ये भी नहीं दिया है कि वेदर दिस इज रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना, बस वोल्टेज को फोकस करना है, वोल्टेज क्या कह रहा है। सो एट 115 वोल्ट इट इज गिवन दिस मच फील्ड करंट एंड द सेम फील्ड करंट इज हियर, यस, तब तो बल्ले बल्ले कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी current is given at the same field current. If it was not given, then we have to convert this current corresponding to this field current. अगर मान लीजिए यहां 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर कोई भी वैल्यू पे शॉर्ट सर्किट करंट होता, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस शॉर्ट सर्किट करंट करस्पॉन्डिंग टू फील्ड करंट ऑफ 2 एम्पियर। यहां पे वो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो सीधे वोल्टेज बाय करंट कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो सिंक्रोनस रिएक्ट वो ZS आ जाएगा और फिर RA तो अंडर रूट ZS स्क्वायर माइनस XS स्क्वायर RA स्क्वायर कर देना, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन रखा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं कर सकते, वैसे बता रखा हूं सब कुछ, बट फिर भी। तो कितना आ रहा है, व्हाट इज ZS 115 अपॉन, क्योंकि पर फेज दे रखा है तो आपको बाय रूट 3 वगैरह नहीं करना, अपॉन, ये दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर दूं ना, तो व्हाट इज ZS 115 अपॉन द करंट एट द सेम फील्ड करंट, तो सेम फील्ड करंट 2 एम्पियर, ये 5, कितना आ रहा है 23 ओम, क्लियर है। अच्छा, तो XS कितना होगा, अंडर रूट ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर, ZS कितना है 23 का स्क्वायर माइनस RA इज हाउ मच 1.5 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 22.951 आंसर। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी मेरा कहना यह है कि आप ये जो वोल्टेज दिया रहे इसको फोकस करना, यही सब कुछ है, ठीक है। इसी के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड करंट होगा, उसी फील्ड करंट पे आपको ये करंट निकाल करके वोल्टेज बाय करंट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। और इस इंपेडेंस को बोलते क्या है, सो दिस इज कॉल्ड एज सेचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस या सेचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। और एक्चुअल एयर गैप के करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज वगैरह करके रेशियो लोगे, ये वाला जो है, तो दैट इज अनसेचुरेटेड, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बस हो गया, ये तो सॉल्व हो गया, राइट। इसमें क्लास में तो बहुत डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, सारा केस सब कुछ लिया था, एक बड़ा सा क्वेश्चन भी कराया था।
ओके फाइन, आगे बढ़े। A 50 hertz 4-pole 3-phase star connected synchronous motor has a synchronous reactance of इतना and negligible armature. The excitation is such as to give an open circuit voltage. अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये EF जो कहते हैं हम लोग वो भी दे दिया है. The motor is connected to 11.5 kV यानी V भी दे दिया है. तो देखो EF भी दिया है, V भी दिया है और एक्सेस भी दे दिया है, करेक्ट, फ्रीक्वेंसी वगैरह भी है. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द मोटर कैन सप्लाई बिफोर लूजिंग सिंक्रोनिज्म. अब बताओ मैक्सिमम लोड यानी वो मैक्सिमम पावर पूछ रहा है बिफोर लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म. तो डेल्टा कितना लोगे सर? 90 लेंगे ना, बस वही पूछ रहा है कि डेल्टा 90 पे पावर निकालो. ईवी दिया, EF दिया है, V दिया है, एक्सेस दिया है. सिंपल, बस लैंग्वेज क्वेश्चन का पढ़ना है, हो गया सॉल्व. राइट, तो कई बार हमेशा क्वेश्चन टफ या लेंदी नहीं आता, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. क्लियर? तो देखें जरा, यहीं पे सॉल्व कर दें. चलो दूसरा पेज ले लेते हैं. राइट, that V is how much? (11.5 into 10 to the power 3 divided by √3). कितना आ रहा है? 6639.5 वोल्ट. अच्छा, EF कितना आ रहा है? 13.2 into 10 to the power 3 by √3, 7621.0 वोल्ट. ठीक है, ये दो वोल्टेज आ गया. नाउ पावर डेवलप्ड क्या लिखते हो? 3 EF V बाय एक्सेस साइन डेल्टा. राइट, तो बस अब करना क्या है? मैक्सिमम बिफोर लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म. तो बिफोर लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म मैक्सिमम पावर यानी डेल्टा 90. तो बस डेल्टा 90 यूज करके जो पहला पार्ट है बताओ कितना हो जाएगा? पावर डेवलप्ड 3 इंटू 6.6395 अगर किलोवाट में रख रहे हैं तो 7.621 डिवाइडेड बाय कितना? 120 ना, 120. हाउ मच इट इज? 1.265 मेगावाट या 1265 किलो. वो जिसमें भी क्वेश्चन दिया रहे वो तो आप निकाल लोगे उसमें. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था. अब क्वेश्चन बी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि टॉर्क है ना, आर्मेचर करंट, पावर फैक्टर वगैरह भी बताइए. मोटर टॉर्क, तो मोटर टॉर्क तो सिंपल है. टॉर्क कैसे निकालोगे? जब पावर डेवलप्ड पता है तो पावर डेवलप्ड बाय 2 पाई n बाय 60 या 2 पाई ns लिख देता हूं यहाँ पे. ns 120 f बाई p कर लेंगे हम लोग. राइट, तो कितना आ रहा है ns? कितने 4 पोल की मशीन है ना, 1500 हो गया. 1500 तो कितना हो जाएगा? 1.265 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ns. कितना है ns? 1500 ना, बाय 60. हाउ मच इट इज? कितना आ रहा है? 8053.2 न्यूटन मीटर. ठीक है, ये हो गया हमारा टॉर्क. अच्छा, अब पावर फैक्टर वगैरह, करंट वगैरह के लिए तो आर्मेचर करंट क्या होगा? EF माइनस V बाई एक्सेस, और मोटर है तो V माइनस EF बाई एक्सेस. राइट, ये बी पार्ट चल रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? V माइनस EF बाई J एक्सेस. कितना है वोल्टेज? 6639.50 माइनस 7621 माइनस 90 डिवाइडेड बाय
120 इंटू 90, ठीक है। -90 समझ में आ गया होगा, डेल्टा 90 है, मैक्सिमम पावर का केस है, कितना आ गया 84.23 एंगल -41.06। करंट ऑलरेडी माइनस ऐसे करके आया है -5, तो सीधी सी बात है लैगिंग करंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पावर फैक्टर, हाउ मच, कॉस ऑफ 5 कितना है 41.06, और लैगिंग की लीडिंग, तो लैगिंग दिख रहा है ना, करेक्ट। वोल्टेज अगर 0 है और करंट का एंगल -41.06 आया तो लैगिंग है, तो ये भी आ गया। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, बट ट्रिकी होता है थोड़ा सा, कोई एक ऐसा लाइन दे देगा, कुछ ऐसा सोचने को आपको दे देगा, वही रहता है और कुछ नहीं होता। बस बोल दिया कि बिफोर लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, तो डेल्टा 90, अब वो लिख के नहीं दिया, वो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलें। टॉर्क, लाइन करंट एंड पावर फैक्टर, तीनों ही आ गया ना, टॉर्क, लाइन करंट, पावर फैक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में अगेन सी, लैंग्वेज पे ध्यान दो, हमेशा क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ना है बस। On no load, the EMF of a 2.2 kV star connected 3-phase 4-pole synchronous motor may be considered equal to in phase with the terminal voltage। यानी नो लोड पे EF और V दोनों क्या है, एक साथ है, डेल्टा 0 है कह सकते हैं। If on the application of load the EMF induced is retarded by 1 mechanical degree। अब सीधी सी बात है, जैसे ही लोड लगा है, राइट, सिंक्रोनस मोटर है, तो EF नीचे ही रहता है वोल्टेज के, तो रिटार्डेड बाय 1 मैकेनिकल डिग्री, तो उसको क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेंगे, P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल करके। अच्छा, कैलकुलेट द आर्मेचर करंट एंड पावर डेवलप्ड बाय द मोटर टेकिंग सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज 3 ओम एंड द स्टेटर रेजिस्टेंस टू बी निग्लिजिबल। तो बहुत ही सिंपल है, डेल्टा आपको थोड़ा लैंग्वेज में दिया है कि जैसे ही लोड लगाया है तो जो EF है वो रिटार्ड हो गया कितना एंगल से, 1 मैकेनिकल डिग्री से। मतलब नो लोड पे दोनों साथ था V और EF, जैसे ही लोड लगाया तो जो EF है वो 1 एंगल से 1 डिग्री मैकेनिकल से रिटार्ड हो गया। ये मान लो V है, नाउ दिस इज EF। पहले V और EF क्या था, साथ था। तो पूछ रहा है इस केस में आर्मेचर करंट, पावर डेवलप्ड और हाँ ये दोनों बताइए। तो बस कुछ नहीं करना, उसको पहले 1 मैकेनिकल डिग्री को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज दिस वोल्टेज, EMF, करंट, दीज ऑल आर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिकल एंगल इज रिलेवेंट। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, क्वेश्चन का करो, सॉल्व करो, मैं भी करता हूं, फिर मैच करेंगे। ओके फाइन, डन। ठीक है, चलो, तो नो लोड पे योर EF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 220/√3, कितना आ रहा है ये, 1270.17 वोल्ट। आर्मेचर रेसिस्टेंस इग्नोर करना है, एक्सेस 3 ओम इट इज गिवन। अच्छा, 4 पोल की मशीन है, ओके। लोड एंगल डेल्टा कितना हो जाएगा, P/2 इंटू 1 डिग्री, तो P/2 4/2 इंटू 1 डिग्री, कितना 2 डिग्री, योर डेल्टा हो गया। तो बस IA -5 इज इक्वल टू, मोटर है ना, तो V एंगल 0 माइनस EF एंगल माइनस डेल्टा बाई JXS। अच्छा, तो V कितना है 1270.17,
एंगल 0 माइनस 1270.17 एंगल -2 डिवाइडेड बाय 3 एंगल 90। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों सेम वैल्यू लिया है क्योंकि EF में कोई चेंज नहीं बोला जा रहा है, सीधा लोड लगाया और वो 1 डिग्री से रिटार्ड हो गया, दैट इज गिवन। ठीक है, तो कितना आ जाता है ये, हाउ मच इट इज 14.78 एंगल -1 डिग्री। देखो यही आ रहा है कैलकुलेट करके। अब पावर डेवलप्ड, ये तो हो गया हमारा करंट। हाँ जी सर, अब पावर डेवलप्ड कितना बाय द मोटर, तो पावर डेवलप्ड कितना होता है 3VEF बाय एक्सेस साइन डेल्टा। हाँ जी, तो 3 इंटू 1270.17 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है ये 56.3 किलोवाट आंसर। ठीक, करंट भी आ गया, पावर डेवलप्ड भी आ गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये देखना था कि वो जो रिटार्डेड बाय 1 मैकेनिकल डिग्री बोला है उसका मतलब क्या है। और जब आप पावर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे EF और V क्या है, सेम ही है, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि उसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ट्राई करो इसको। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। राइट, a 3-phase 6-pole 2.3 kV स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर है जे सिंक्रोनस रिएक्टेंस गिवन है। चलिए जी, द मोटर इज इनिशियली ऑपरेटिंग एट ए लोड ऑफ 120 किलोवाट विथ फील्ड करंट एडजस्टेड। ठीक है, सच दैट द आर्मेचर करंट इज मिनिमम। अब समझना, in synchronous machine we know that with the help of excitation even we can vary power factor also। yes sir, याद है जब एक्साइटेशन बढ़ाया घटाया सब देखा था हमने, तो पावर फैक्टर, डेल्टा, करंट, है ना, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, सारी चीजें चेंज होती थी, इफ यू कैन रिमेंबर। यस सर, तो ये बोल रहा है कि फील्ड करंट को हमने इस तरह से एडजस्ट किया सच दैट द आर्मेचर करंट इज मिनिमम। हमारा आर्मेचर करंट अभी क्या है, मिनिमम है। तो बताओ कौन से पावर फैक्टर पे आर्मेचर करंट मिनिमम होता है, तो सर यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर करंट मिनिमम होता है। ठीक है, अब यही चीज, अब ये तुम्हें क्वेश्चन में नहीं लिख के देगा कि यूनिटी पावर फैक्टर पे था और करंट मिनिमम, ये तुम्हें खुद दिमाग लगाना है। करेक्ट, जैसे IA cos phi इक्वल टू IA cos phi, तो करंट मिनिमम कब होगा, करंट इज मिनिमम व्हेन योर पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, दैट इज 1। ठीक है, तो करंट इज मिनिमम यानी इस टाइम में पावर फैक्टर 1 रहा होगा। अब आगे बोल रहा है द फील्ड करंट इज नाउ इंक्रीज्ड सच दैट द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब बोल रहा है एक्साइटेशन को हमने बढ़ाया, यानी पहले यूनिटी पावर फैक्टर पे मशीन था, अभी एक्साइटेशन को बढ़ा दिया है ताकि आर्मेचर करंट भी 50% बढ़ गया। ठीक है, विद दिस फील्ड करंट द लोड इज रिड्यूस्ड टू 60 किलोवाट। और अब इस बढ़े हुए एक्साइटेशन पे, अब खुद सोचो, सिंक्रोनस मोटर है। हाँ जी, जरा समझना, अगर मैं फेजर से ही आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा आइडिया दूं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो समझो पहले क्या था, ये यूनिटी पावर फैक्टर पे था। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब ऐसा ही होगा ना, EF, हाँ जी सर, V और ये JIXS मोटर है। हाँ जी सर, अब एक्साइटेशन को बढ़ाया, मान लो लोड यहां पे है P, अगर आपको याद हो, एक्साइटेशन को बढ़ाया, यानी कि जब हम सिंक्रोनस मोटर है और एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, इट विल बिकम ओवर एक्साइटेड कंडीशन। अभी यूनिटी पावर फैक्टर पे था, नॉर्मली एक्साइटेड, नाउ एक्साइटेशन हैज बीन इंक्रीज्ड सो दैट द आर्मेचर करंट आल्सो इंक्रीज्ड। हाँ जी, और लोड जो भी है ना, लिखा है ना, एंड लोड इज रिड्यूस्ड टू 60 किलोवाट लोड, तो यानी कि कुछ ऐसा फेजर बना होगा, मान लो लोड 60 किलोवाट, कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है,
यहां ये EF ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यूनिटी से क्या हो गया, ये लीडिंग हो गया, यूनिटी से लीडिंग हो गया, जिसमें हमने एक्साइटेशन को बढ़ाया तो ऑफ कोर्स ओवर एक्साइटेशन केस यानी EF की लेंथ बढ़ गई, हाँ जी, और सीधी सी बात है लोड कम हो गया, ठीक है, ये भी बोला हुआ है। कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर, तो बोल रहा है अब वो जो नया वाला आर्मेचर करंट पावर फैक्टर होगा वो बताइए। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर है। इवन अगर आप एग्जाम में ये फेजर वेजर नहीं बनाते हैं, थोड़ा वैसे कॉमन सेंस से सोचोगे कि करंट मिनिमम बोला है यानी यूनिटी पावर फैक्टर था, और एक्साइटेशन को बढ़ाया यानी ओवर एक्साइटेड हुआ यानी कि मोटर है तो लीडिंग पावर फैक्टर हो गया होगा। तो बस ये करके बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज अगेन गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका जरूर एक बार स्क्रीनशॉट लो, खुद से सॉल्व करो, मैं भी करूंगा इधर, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो देखते हैं। ओके पहले बताओ वोल्टेज कितना, 2300 बाई रूट 3, 1328.0 वोल्ट, और एक्सेस कितना दे रखा है 12 ओम। तो करंट शुरू वाला आर्मेचर करंट कितना, 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 2300 इंटू 1। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लिखेंगे करंट क्या है, मिनिमम है। करंट मिनिमम मतलब cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दैट इज वाई रूट 3 VI cos फाई हमने 1 लिया। हाउ मच इट इज 30.123 एम्पियर, राइट। अच्छा अब ये तो हो गया पहला वाला केस। नाउ फील्ड करंट इज इंक्रीज सो दैट IA2 बिकम्स करेक्ट, ठीक है। कितना चेंज हुआ है करंट में, कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो क्या लिखें, IA2 cos फाई 2 इज इक्वल टू IA1 cos फाई 1, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 30.123 इंटू 1, 30.123, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये भी बोल रहा है ना कि 50% से बढ़ चुका है करंट। जरा एक बार क्वेश्चन में चलें। such that the armature current is, the field current is now increased such that the armature current is increased by 50%. आर्मेचर करंट 50% से बढ़ गया और लोड 60 किलोवाट। तो कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर, ठीक, ओके फाइन, ओके फाइन। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब जरा IA2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो IA2 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स IA1, क्योंकि 50% से बढ़ रहा है तो 1.5, और I1 कितना है 30.123, कितना आ रहा है ये 45.185, ठीक है। तो ये वैल्यू और इन वैल्यू से देखो IA2 cos फाई 2 करेक्ट, और उसको IA2 की वैल्यू यहां रख दो। अच्छा सर ये कैसे अप्लाई किया, अरे एक्टिव पावर में तो चेंज नहीं हो रहा ना, बस एक्साइटेशन है ना के बारे में बोला गया है, राइट। तो उसके हिसाब से पहले हम लगाएंगे कि इतना होगा। अब जब एक्टिव पावर भी बोल रहा है कि हमने लोड को भी चेंज कर दिया, अब बताओ करंट, तो वो हम आगे देखेंगे, अभी वेट करो। अभी सिर्फ मैंने एक्साइटेशन को बढ़ाने से करंट कितना बढ़ेगा और नया करंट क्या होगा अभी वो डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं लोड को कम करूंगा आगे, थोड़ा वेट करना, ठीक है। तो कितना हो गया ये cos फाई, यहां रख देंगे तो that cos फाई 2 इज इक्वल टू 30.123 अपॉन 45.185, कितना हो जाएगा 0.667। लीडिंग या लैगिंग, ऑफ कोर्स लीडिंग। क्यों लीडिंग, क्योंकि एक्साइटेशन बढ़ाया तो यूनिटी पावर फैक्टर से ओवर एक्साइटेड कंडीशन गया तो लीडिंग पावर फैक्टर पे चला गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फाई 2, यहां से कितना आएगा फाई 2 आ जाएगा 48.2 डिग्री लीड, ठीक है। ये पार्ट हो गया, हाँ जी। अब हम बैक ईएमएफ निकाल लेते हैं, करेक्ट, तभी तो नया करंट नया पावर वगैरह डायरेक्शन में जाएंगे, राइट।
अब आ जाइए, तो EF2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू V एंगल 0 माइनस IA2 माइनस 5 इंटू JXL। एक ही इक्वेशन है जिससे सारी चीजें होती हैं। तो 1328 एंगल 0 माइनस 45.185 एंगल 48.2 लीडिंग है पावर फैक्टर, तो प्लीज माइंड इट, यहां मैंने प्लस साइन रखा है, इंटू 12 एंगल 90। चलिए इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 1769.4 एंगल माइनस 11.8 डिग्री। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अब यहां से भी देखो तो वोल्टेज से ज्यादा आया ना EF, हाँ जी, वोल्टेज से ज्यादा EF मतलब थोड़ा आइडिया लग गया होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे और लेंथ बढ़ गई, हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझना, यहां तक हो गया, एक्साइटेशन वाला पार्ट हो गया। अब बोल रहा है कि जो एक्टिव पावर है वो इतना घटा रहे हैं, अब एक नया डेल्टा हमें ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये एक पार्ट हो गया अभी, अब इसमें आगे बढ़ेंगे अब, क्लियर। चलिए, अगेन द लोड इज रिड्यूस्ड टू 60 किलोवाट। अब जरा समझना, ये पार्ट हुआ, अब इसके आगे कहानी है कि लोड इज रिड्यूस्ड टू 60 किलोवाट। मतलब थोड़ा समझना, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें एक्साइटेशन का बस हमने रोल देखा, उसमें एक्टिव पावर को सेम रखा, I1 cos phi 1 IA2 cos phi 2 इक्वल करके सब कैलकुलेट कर लिया। अब लोड को हम रिड्यूस कर रहे हैं 60 किलोवाट, उसका इंपैक्ट देखेंगे कि क्या होगा, राइट। तो जो जब लोड को कम कर रहे हैं, एक्साइटेशन को तो उस टाइम चेंज नहीं करें, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एक्साइटेशन, नहीं, लोड को सिंपली कम कर रहे हैं। एक्साइटेशन जो बढ़ा चुके जितना उतना ही अभी है, ठीक है, हाँ जी। तो क्या लिखे हम, तो दिस इज EF2 इज इक्वल टू EF1, ये बराबर ही रहेगा, इसको अब चेंज नहीं करना है। तो P3 इज इक्वल टू 3V EF3 साइन, या EF2 कर दो, साइन डेल्टा 3 अपॉन XS, राइट। तो साइन डेल्टा 3 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 1328 इंटू 1769.4, हाउ मच इट इज 0.102, ठीक है। दिस इज योर साइन डेल्टा 3। तो यहां से डेल्टा 3 कितना आ गया, 5.86 डिग्री, ठीक है। तो जो नया वाला लोड एंगल है 5.86 डिग्री आएगा जब लोड को भी कम करेंगे तब, राइट। तो नया करंट देख लें अब, तो IA3 माइनस phi3 इज इक्वल टू 1328 एंगल 0 माइनस 1769.4 एंगल माइनस 5.86, ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं। और IF देखो वही है 1769 जो अभी कैलकुलेट किया था, राइट, ये 1769। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस, क्यों, क्योंकि एक्साइटेशन चेंज करने का इंपैक्ट ऑलरेडी वी हैव सीन, नाउ लोड इज रिड्यूस्ड टू 60 किलोवाट, ये भी बोला जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो दिस माइनस दिस, ठीक है, अपॉन 12 एंगल 90, तो कितना आ जाएगा ये 39.04 एंगल 67.3 डिग्री, राइट। तो ये हो गया। अब पावर फैक्टर, तो करंट दिख ही रहा है लीडिंग, तो अब इस केस में पावर फैक्टर कितना होगा, कॉस ऑफ 67.3 डिग्री यानी 0.386 लीड, आंसर। तो पॉइंट इज कि एक्साइटेशन को बढ़ाया तो हमने देख लिया क्या क्या होगा, EF पता कर लिया, फिर बोल रहा है अब लोड को कम कर दिया तो EF तो उतना ही रहेगा, लोड कम करने से EF तो चेंज नहीं होगा। तो लोड कम करने से यानी लोड चेंज करने से हमने नया डेल्टा कैलकुलेट किया और उस डेल्टा को यूज करके फिर करंट और पावर फैक्टर निकाला। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट इतना भी नहीं, राइट। देखो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, बट गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे ये,
इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये लैंग्वेज भी थोड़ा अच्छा था कि करंट वास लिखा था ना, जब भी करंट मैक्सिमम मिनिमम कुछ दिया रहे वहां भी थोड़ा दिमाग लगाना है, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए। A three-phase 415 volt 6-pole 50 hertz star connected synchronous motor has an induced EMF given है. The stator winding has a synchronous reactance of this much. The motor develops a torque of 220 Newton meter. ये भी दिया है. The motor is operating of 415 volt 50 hertz. Calculate the current drawn from the supply and its power factor. ठीक है. ओके फाइन। तो अगेन इस क्वेश्चन में जब आपको टॉर्क दिया है, करेक्ट, डेवलप टॉर्क ऑफ इतना, टॉर्क और स्पीड का यूज करके पावर निकाल लेंगे, डेल्टा वगैरह निकाल लेंगे। डेल्टा आ गया आई ए इक्वल टू ई एफ माइनस बी। तो थोड़ा सा क्या है, ये टॉर्क की आदत नहीं होती है हमें, वी जनरली वी डोंट कैलकुलेट टॉर्क एंड ऑल इन सिंक्रोनस। तो इसीलिए मैंने ये टॉर्क करके थोड़ा सा रखा था कि आपको थोड़ा डिफरेंट लगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ओके, डन, ले लिया। यही था ना। ये था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है, जरा देखते हैं। ठीक है, चलो, ये पेज चला गया था
ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो दिस इज गिवन, वोल्टेज कितना, हाउ मच, 415/√3 कितना आ रहा है, 239.6 वोल्ट। और ई एफ हाउ मच, 520/√3 300.2 वोल्ट। ठीक है, एक्सेस गिवन है कितना, 2 ओम, और 6 पोल 50 हर्ट्स, एन एस कितना 120 F/6 पोल है ना, 1000 RPM का एन एस। ठीक है, सो दिस डेटा इज गिवन, इतना गिवन है। अब हमें यहां से कैलकुलेट, टॉर्क इज ऑल्सो गिवन, हाँ जी, तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा, डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू टॉर्क हाउ मच गिवन, 220 इंटू ओमेगा कितना, 2 पाई NS/60, तो कितना आ रहा है ये 23.038 किलोवाट, राइट। तो फिर अगर हम देखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, पी डी इज इक्वल टू, पेज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 3VEF/XS साइन डेल्टा। तो साइन डेल्टा यहां से कितना हो जाएगा, हाउ मच, PD यानी कि 23.038 ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, इंटू 10⁻³ इंटू XS 2 है, PD इंटू 3 इंटू V इंटू F, 239.6 इंटू 300.2, राइट, कितना 0.2135, तो डेल्टा कितना आ जाएगा 12.33, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब आर्मेचर करंट, तो EF माइनस या V माइनस EF/JXS, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज आर्मेचर करंट, IA माइनस फाई इज इक्वल टू V एंगल 0 माइनस EF एंगल माइनस डेल्टा अपॉन JXS, तो कितना हो जाएगा 239.6 एंगल 0 माइनस 300.2 एंगल माइनस 12.33, मोटर है तो अपने आप माइनस लिखोगे डेल्टा में, अपॉन 2 एंगल 90, तो हाउ मच इट इज 41.8 एंगल 39.94 डिग्री, राइट। तो पावर फैक्टर अब ऑलरेडी दिख रहा है लीडिंग, क्योंकि है ना, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 39.94, दैट इज 0.767 लीड। तो कई बार टॉर्क दे करके हमें ऐसे पूछ सकता है कि बताइए अब फिर जो नया वाला करंट होगा, पावर होगा, या जो गिवन टॉर्क पे होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा होता है तरीका, उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पी डी करेक्ट, टॉर्क इंटू ओमेगा यूज करके निकाला, और उसके हेल्प से हमने फिर करेक्ट यहां से डेल्टा निकाला, क्योंकि करंट पावर फैक्टर जब भी निकालना होता है, आई हैव टोल्ड यू इन क्लास ऑल्सो कि एक ही इक्वेशन है, EF इज इक्वल टू V प्लस JIA/XS, उसमें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो 2 अननोन एट ए टाइम भी निकल सकता है, स्क्वायरिंग एंड इक्वेटिंग बोथ साइड वगैरह समझाया था ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिंक्रोनस में तो मतलब राइट, ओके, अच्छा, ओके राहुल, यस यस, ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन दिस, इसको भी लिख लीजिए। ओके फाइन, हाँ 0.7 से, ठीक है राहुल, करेक्ट, हाँ राइट जॉय,
यूपीएफ पे। ठीक है, ये हो गया। अब समय नहीं है, 2 आवर का ही सेशन है ये डीसी सिंक्रोनस का, बट एक पॉइंट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिंक्रोन वो सैलिएंट पोल मशीन, सैलिएंट पोल मशीन में जैसे मैंने 5 इक्वेशन प्लस 1 पावर इक्वेशन दिया था सैलिएंट पोल का, एक्टिव पावर का। तो सैलिएंट पोल एक्टिव पावर के अगर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग आएंगे, और अगर मैक्सिमम पावर वगैरह तो डीपी बाई डी डेल्टा 0 करके निकाल दोगे। टेस्ट सीरीज में देखा होगा, एक आध क्वेश्चन था, तो वहां से डेल्टा एट पी मैक्स निकालना। एंड बाकी जो 5 इक्वेशंस हैं सैलिएंट पोल मशीन के, तो उसमें से पहले स्टार्टिंग के 3 यूज करना, दैट इज साई इज इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा वाला, और फिर ई एफ इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा आइए, है ना वो वाला, और 10 साई वी साइन 5 प्लस। ठीक है, तो अगर ये तीनों से नहीं होंगे तब ये दोनों यूज करो, तो बेटर ये दोनों नहीं भी यूज करोगे चलेगा, ये दीज 3 आर इंपॉर्टेंट। तो ये स्टार्टिंग के 3 इक्वेशंस और 1 पावर इज इक्वल टू वी ई एफ बाई एक्स डी साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर बाई 2 साइन 2 डेल्टा 1 बाय एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स टी। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो उसे सैलिएंट पोल के सारे क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग आते हैं, आप सीधे उसमें रखते चले जाओ, आई डी एक्स डी एक्स क्यू सब दिया रहता है, आंसर आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ओके फाइन। हाँ, डी एक्सिस क्यू एक्सिस वाला फॉर्मूला बिल्कुल ठीक। एंड आई होप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, और जो बच्चे अभी भी नहीं दे रहे हैं प्लीज टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। अगर टेस्ट देने में मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद देखो कहां नहीं आए, क्यों नहीं आए, और फिर उसको सॉल्व करो बार बार, क्योंकि गेट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसमें कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूं, ज्यादा थ्योरी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन डेली, याद है? अरे 100 नहीं कर पाओ 50 करो, 60 करो, तो 100 क्वेश्चन अपने आप तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट यूज होते चले जाएंगे। नो नीड टू रीड थ्योरी एंड ऑल। फॉर गेट एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू, क्लास में भी बोला था, रिवीजन ये सब मुझे समझ नहीं आता, बस सीधे क्वेश्चन लगाओ, डेली 100 क्वेश्चंस, तो सारे फॉर्मूले भी इतनी बार यूज हो जाएंगे कि आपको फॉर्मूले भी रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार उसको फॉर्मूले को देख देख करके लगाओगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे, स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो गेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही चेक होता है। ठीक है, तो खूब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, वेदर इट इज मैथ रीजनिंग, उसको भी लाइटली मत लेना, मैथ रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, और बाकी मशीन नेटवर्क कंट्रोल सबके प्रॉब्लम लगाओ, जितने प्रॉब्लम लगा सको उतने प्रॉब्लम लगाओ। हाँ, 100 क्वेश्चन डेली, तो वो तो और अच्छा लगता है। जैसे देखो, हमारे जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह है, अगर वो 100 रन लगाएं, सेंचुरी मारे, हमें कितनी खुशी मिलती है। लेकिन हमें जब खुद 100 क्वेश्चन करना पड़े डेली, तो हम नहीं करते ना। तो समझो, दूसरों से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, खुशी लेते हैं, खुद परफॉर्म करो, खुद का करियर बनाओ कि 100 क्वेश्चन डेली करना है, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना, 100 क्वेश्चन डेली, ये एक टारगेट बना लिया। ठीक है, और देखो अपने आप अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, राइट राइट, अभी अभी नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा, अभी होगा ना 2 आवर का, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन होगा बाय मुरली सर, वो भी जरूर अटेंड करना सभी लोग, राइट? ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलो, बाकी कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछना, राइट? चलो, थैंक यू सो मच।
Dear students, greetings of the day. Welcome to this session, GTQ session. This is Murli, Machines faculty, Made Easy. I'll be dealing this session, induction and transformers. First, let us start with this question. A 3-phase 400 volt by 200 volt delta star 50 Hz induction motor is found to draw a line current of 20 amperes at a power factor 0.4 when it is blocked. Let us continue. In this question you are seeing 400 volt by 200 volt delta star induction motor.
delta star, which means this belongs to stator, this belongs to rotor. As you all know, a factor K, turns ratio K, must be always specified in per phase basis only. Per phase. Delta, no issues. Line voltage is equal to phase voltage. But where is the issue means? In the star. In the star, this is line basically. So if you want phase, you have to make it 200 by root 3. So K value for this particular question, for this particular motor is given like this: 400 by 200 by root 3. Where we have to use this K value, I'll let you know later. This is given first in the question. 400 by 200 volt induction motor means that is the way you have to take it. Stator, rotor. As it is very clearly given, rotor is in star by root 3 per phase value. Next. It is found to draw a line current of 25 ampere. Remember this value, line current is mentioned. When we go to equivalent circuit of induction motor, everything must be literally in per phase. Everything means everything. It should be in per phase basis only. For example, as it is mentioned in the question that it is blocked. The motor is blocked. If you draw an equivalent circuit of induction motor for blocked condition, neglecting the shunt branch because it is blocked condition, it looks like this. VVR by root 3. Generally we say VVR by root 3, considering the motor stator is in star, but clearly given in the question delta. So line is equal to phase. So directly you can say VBR. Next, IBR should be phase value. Phase value means line value is 25 ampere given in the question. Line current is 25 ampere, so it should be 25 by root 3, it is a phase value. Next, this is R01, this is X01. The equivalent circuit referred to stator side. So R01 contains R1 plus R2 dash. Resistance of the rotor referred to stator side, which means R2 into K square. So first our target is, based on the given data in the question, what you are asked is find out stator rotor resistances. R1, R2 you have to find it out finally. So first it is mentioned in the question that it is drawing a line current under blocked condition at rated voltage. At rated voltage. So what is the voltage applied? 400. Here it is 400 volts. Phase value only, line is equal to phase. Next, the current is 25 by root 3. So what you will now get is the total impedance of the circuit you will get. V by I gives you the per phase impedance, means Z01 of the circuit. Now let us go on to the basic network theory, impedance triangle. From that what we can write is if this is phi or phi SC, power factor 0.4 means cos phi is equal to 0.4, obviously lagging. Power factor of this circuit means
angle between voltage and current is given cos inverse 0.4. We have to take it like that. So this value is R01, this value is X01, this value is Z01. Then from this what we can write is cos phi is equal to R01 by Z01, and we can write R01 is equal to Z01 cos phi. The first target what we have to do is R01, finding out R01 in a simple possible way. So first Z01 is VBR by IBR by root 3. Obviously V by I is Z01, that is 400 by 25 by root 3 is Z01. So it is 27.712 ohms. So from this R01 value is 27.712 into 0.4. The value is 11.085. ohms per phase. As I told you already, when we are dealing equivalent circuit of a 3-phase induction motor, everything must be written in per phase only. Thank you for the answers. Next, moving on to the question. It is given torque developed by the motor under the above condition is 25 Newton meter. Let us go back to the power stage torque relationship. Torque developed by the motor T is equal to 6T by 2 pi ns, air gap power. You know, air gap power is also called as rotor input, rotor copper loss by slip. This is equal to 6T by 2 pi ns 3 I2 dash square R2 by S. Dash communicates running condition current in the rotor. Current in the rotor under running condition, but this question is concerned about blocked, means standstill, starting when the rotor is not running. The current in the rotor, you can take it as I2 directly, I2. So slip will be 1. So as per the question, since clearly given blocked, torque is 25 Newton meter, T is equal to 3 into 60. Why 3 came? Because of 3 phase. Everything is per phase into 3. 3 into 60 by 2 pi ns I2 square R2. This is the target, final target, I2 square. Now I1 is known, I2 is not known. I1 is known, I2 is not known. But very simply we can calculate I2 because what is mentioned in the question starting is turns ratio. You are seeing for the first time induction motor data is like that.
400 by 200, like a transformer it is given. You know, induction motor is nothing but a rotating transformer. So this is K. You know already, like this. V1 by V2 is equal to I2 by I1 is equal to K. So standard. So I2 is K times I1. I2 is K times I1. What is K? 400 by 200 by root 3. So I2 is K times I1, 3.464 into what is I1? 25 ampere, but you can't take 25 directly because this is the line current. This is the line current. We have to deal everything on per phase basis, as I told you. So 25 by root 3. Good. Thank you for the replies. Good. 50 amperes. Obviously per phase. Therefore, what is mentioned in the question? Torque is 25 Newton meter is equal to 3 into 60 by 2 pi. Synchronous speed is 1000 rpm. 3 into, this is 50 square into R2. From this equation we can calculate R2, that is rotor resistance per phase. So calculate the rotor resistance from this equation and tell me. Good. Now let us go back to this point. R01 is a combination of R1 plus K square R2, that is 27, that is 11.085.
Thank you for the replies. Now let us move on to the next question. A 230 volt, 20 HP, 60 Hz, 6 pole, 3-phase induction motor driving a constant torque load at rated frequency, rated voltage, at rated output. It has a speed of 1175 RPM. And then the question what is asked is, if voltage is dropped by 10% and frequency is dropped by 6%, what will be the new speed of the motor maintaining the same torque? T proportional to S V square by R2 into F. This is a very useful formula in induction motor analysis, which came from the basic equation only. If you see the basic torque equation, the electromagnetic torque developed in the motor, neglecting the stator parameters, is equal to 3 into 60 by 2 pi ns into S E2 square R2 by R2 square plus S x2 square. This is the basic equation which we generally take as far as the stator parameters are neglected. When you are dealing a motor under normal running conditions, as induction motor, you all know that always runs near to synchronous speed. Slip is a very small value. When slip is a very small value, you can ignore S square term. If you ignore S square term, in the denominator there is R2 now. Remember that point. Next, in the denominator there is Ns. Ns is proportional to F, frequency only. In the numerator there is E2. E2 is proportional to supply voltage V. So V square. Yes, V square by R2 into F. This formula is very useful while dealing many set of induction motor questions. How to apply this formula? In this question, there is nothing given about resistance. Resistance is not getting changed in this question. So let resistance is constant now, unchanged. So T proportional to S V square by F. Because in this question what are changing? Voltage is changing, frequency is changing, and finally we have to find out the speed or slip. So what we can write is, from this relation like this, T2 by T1 is equal to S2 by S1 into V2 by V1 square into F1 by F2. Then voltage is dropped by 10%. So this is 1. Torque is constant. Driving a constant torque load means whether the voltage is dropped or the frequency is dropped, torque is maintained constant. So T2 by T1 is 1. What is slip? First slip S1. S1 is equal to 6 pole 60 Hz means Ns is 1200. Then 1200 minus 1175 by 1200. S1 is 0.0208. So 0.0208. S2. V2 is 0.9 V1 because voltage is dropped by 10% square into frequency is dropped by 6%, so 0.94. By solving this equation,
you will get a new slip value S2. Kindly calculate and let me know the new slip S2 value. So the new slip S2 is 0.024. F2 is 0.94 F1, that is 0.94 into 60. 60 is the first frequency, so NS2 is 120 F. By P6. If the frequency is reduced by 6% for a 6-pole motor, 60 Hz motor, what will be the new synchronous speed? Is this 120 F by P. So N2 is equal to NS2 into 1 minus S2. N is equal to NS into 1 minus S formula. This is equal to 1128 into 1 minus. Now let us move on to the next question. A 3-phase 415 volt 50 Hz 6-pole 960 rpm 4 HP squirrel cage induction motor drives a constant torque load, again operating from rated V and rated F. In this question what you are seeing is both voltage and frequency are reduced by 20%. Previously, voltage and frequency are not reduced by the same percentage, but here voltage, frequency are reduced by the same percentage. Here I want to give you one conclusion from these two questions. When a question like this, when you are solving, check once V by F ratio. If V by F ratio is not constant, like previous question, you have to apply the formula T proportional to S V square by F formula you have to apply. But once you see in a question V by F constant like this, no need to apply the formula, directly you will get the answer in 1 minute. Easily you will get the answer, less than 1 minute. First I want to apply the formula
I want to give you one conclusion and then I will tell you less than 1 minute how to make the answer when the question belongs to V by F control, specifically mentioned operating at constant torque. So first, as usually, going back to the formula, T proportional to (960 RPM) means S1 is 0.04. Then S2 by S1 0.04 into voltage reduced by 20%, 0.8 V1 by V1 square into frequency reduced by 20% F1 by 0.8 F1. From this, if you calculate, you will get nu S2. Now find out the new synchronous speed. NS2 is new synchronous speed is 800 RPM. Then
Did you notice now? In the previous question, this magic won't happen. That is what I want to convey here. NS1 is 1000 RPM, N1 960, S1 0.04. NS2 800 RPM, N2 760, S2 0.05. Slip is changing, NS is changing, N is changing, but if you notice, NS minus N remains constant. If you remember, this particular logic or a concept happening only in V by F control operating under constant or condition. Only in V by F control operating under constant or condition, you can directly say the answer. No need to apply this formula. No need to apply this formula at all. This formula we have to apply if V by F ratio is not constant. For example, like it's given in the previous question, V reduced by 10%, frequency reduced by 6%, like that. But in this particular case, no need to do all this. Directly what you can do is find out new synchronous speed. You know N1, you know NS1. 6 pole 50 Hz means NS1 is 1000. N1 960 means the gap between synchronous speed and running speed of the rotor is 40 RPM. Maintain the gap constant. Which gap? Synchronous speed minus operating speed of the motor. Here the gap between synchronous speed and the running speed is 40. So find out what is the new synchronous speed. Find out what is the new synchronous speed. As the frequency reduced by 20%, obviously synchronous speed became 1000 to 800. So once synchronous speed is 800, the operating speed will be with the same gap, 40 RPM. So in order to maintain NS minus N constant, N must be 760 only. So no need to calculate everything. Directly you will get the answer. This you can apply only for V by F control constant methodology and torque given constant in the question. Only for V by F control, torque constant. Let us move to the next question. Now let us move on to the next question. It is a 50 HP 6 pole 50 Hz slip ring induction motor runs at 960 RPM at full load with a rotor current 40 ampere, allowing 300 watts for copper losses in short circuiting gear. You all know, in a slip ring induction motor, the rotor contains winding, and this winding is intentionally made so that the winding terminus will come out and short circuit and connect it to 3 slip rings, and across the 3 slip rings we want to short circuit it using an additional short circuiting equipment called short circuiting gear. This will happen when the motor is running normally. First what we do, we add some resistance into the rotor through the slip rings. Let the motor start with excellent starting torque. Once the motor runs, disconnect all the starting resistance and the 3 slip rings must be shorted together, compulsory. Disconnecting the resistance by removing the brushes is not the end of the story. We have to short circuit it. Here there is given short circuiting gear also has some copper loss. Generally when we deal power stages, we ignore these kind of small losses.
But if a question mentions specifically short circuiting gear loss also, how to deal, I am explaining. It is mentioned 50 HP. Full load, enough. You can directly take the shaft output of the motor is 50 into 746 watts. The meaning is PSH at full load or rated load. As per the question, as PSH is 37300 watts, mechanical losses are clearly mentioned 1200 watts, and you know the equation like this: rotor output minus mechanical loss is shaft output. So what is rotor output means shaft output plus mechanical losses. We will get a number. Next, we have another formula: rotor output by rotor input is equal to 1 minus S. Rotor output by rotor input is equal to 1 minus S. So when you rotor output, when you know operating slip, we can calculate rotor input now. (960 rpm directly given for a 6-pole machine, 50 Hz means slip is
So finally we got this rotor output value, rotor input value. Once you know rotor input value, rotor output value, take the difference. Input minus output is nothing but losses. Rotor input minus rotor output is rotor losses. This is the target now. We want to find out rotor losses. You know rotor losses. As far as rotor is concerned, rotor contains two things basically. One is core, other one is winding. Rotor core losses are always ignored in the induction motor analysis under normal running condition because of slip frequency. What is remaining? Rotor winding. Rotor winding has only one loss, that is rotor copper loss. In this question it is very clearly given, include short circuiting gear loss 300 watts. So this winding will come out and end at 3 slip rings. Across the 3 slip rings there is a short circuiting gear to short circuit the winding. So if that short circuiting equipment has a copper loss in it, it should be treated as rotor loss only. It comes under rotor copper loss but separately. Rotor winding has a resistance R2, short circuiting gears will have some resistance R, that I square R is rotor copper loss of that short circuiting gear, but finally it should be included in rotor loss only. Means rotor input minus rotor output, if you do, you will get rotor copper loss. This rotor copper loss has two components now. One is basic rotor copper loss plus if any short circuiting gear copper loss is given to you, you have to take it. If it is not mentioned, you can ignore it. That's the meaning actually. Rotor current 40 ampere.
So hope you understood how to interpret this copper loss given in the question belongs to short circuiting gear. It comes under rotor losses only. Next question. The power input to a 3-phase induction motor running at 975 rpm is 40 kilowatt. The stator losses are given, friction and windage losses means mechanical losses are given, total 2 kilowatt. Then efficiency of motor is a straight away power stage question. These are commonly asked in GATE actually, these power stage questions. It is mentioned power input is 40 kilowatt. So here 40 kilowatt is mentioned, given. Then stator losses are 1 kilowatt. This is stator, this is rotor, that is shaft. In the stator there is 1 kilowatt loss, which means stator output is 39 kilowatt. (39 kilowatt go into the rotor without any issue because air cap don't has any power loss. Then 39 kilowatt is rotor input. What is given? Motor is running at 975 rpm, which means slip is 0.025. 6 pole 50 Hz means synchronous speed is 1000. So the slip is 0.025. So when you know rotor input, rotor output is rotor input into 1 minus S. So rotor output is 38.025 kilowatt. Finally, we arrived at rotor output stage. Next, friction and windage losses 2 kilowatt. Here, friction and windage loss will be there. When the rotor output is known, rotor output minus friction and windage loss is shaft output. Therefore, this is the ultimate output of the motor, shaft output of the motor. What you are asked is efficiency. Efficiency is the ultimate output by input given to the motor. So efficiency is output by input, almost 90%.
Let's move to the next question. A 400 volt 50 Hz 4 pole 1400 RPM star connected squirrel cage induction motor has the following parameters. Resistance is given, R is given, XS, XR is given like that. Neglect stator resistance, which means that is rotor resistance. The given data is rotor resistance. You have to take it like that. Neglect core rotational loss of the motor. The motor is controlled from 3-phase voltage source inverter with constant V by F control. Means if you change V, F also should be changed. If you change F, V should be changed in such a way that V by F should be maintained constant. The stator line to line voltage is given to you. You have to find out, and frequency you have to find out in order to obtain maximum torque. This is the logic of the question. We have to find out, obtain maximum starting torque during starting. Specifically mentioned starting. So first, as you all know, equivalent circuit of induction motor I will draw. Then as far as the question is concerned, how we can modify, I'll let you know. This is the equivalent circuit, right? As far as the question is concerned, this branch, no, nothing is mentioned, you can ignore it. R1, nothing is mentioned, you can ignore it. So this is the circuit now. According to maximum starting torque. First of all, as you all know, torque expression is torque proportional to air gap power. That's what I dealt in the previous 2-3 questions back. T is equal to 3 into 60 by 2 pi minus air gap power. Torque is proportional to air gap power. If air gap power is maximum, torque will be maximum. Air gap power means I square into R2 by S. So if the power dissipated in this resistance is maximum, means torque will be maximum. That is what in the theory we discuss. Now the question is how to find out maximum torque condition based on this circuit is based on maximum power transfer theorem only, which means the source impedance, the load impedance must match with the source impedance, like that we say in the maximum power transfer theorem. I am doing that, I am writing that equation now. That's it. In order to achieve maximum torque, R2 dash by S must be equal to all the source impedance. So then question is not about maximum torque, question is about maximum starting, which means S equal to 1.
S equal to 1. So x1 plus x2 dash is equal to R2 dash. That's it. Then what is R2 dash? R means R2 dash only. If you are given questions like that, you have to take it like that only. There is no option for you. So R must be taken as R2 dash only, because what you are given here, neglect. So finally we arrived at this point. X1 plus x2 dash is equal to 1. X1 plus x2 dash is equal to 1. This is the condition to obtain maximum starting torque as per the question and data given to you. Now, you all know x1, x2 dash can be written as 2 pi FL concept. And this question is all about changing voltage and frequency. What is the question final asking target is? They are asking what should be the frequency. So let us imagine some frequency FM corresponding to maximum starting torque. Therefore, finally we arrived here. See, let FM be the frequency specifically for making starting torque maximum. In such case, if you write this equation, you will get this finally, FM. Now let us go back. What is L1, what is L2 dash originally? Let us check. Here, X1 so L1 is equal to L2 dash is equal to X1 by because it is given XS is equal to XR.
both are equal 1.5. So because xs is equal to xr dash, which means x1 is equal to x2 dash. This is what we generally take in the equivalent circuit discussions. So L1 is equal to L2 dash is equal to 1.5 by 2 pi into 50. So first voltage is 400, frequency is 50. Now let us move on to the next question. A 3-phase 400 volt 6 pole 50 Hz squirrel cage induction motor running at a slip 5%.
In induction motor, there is one concept like this. When you apply three-phase supply across the stator at a frequency f, it produces stator RMF. Stator RMF means stator magnetic field at ns with respect to stator. With respect to stator or stationary structure or in space, anything, all are same. And in theory, what you will listen is, rotor also produce rotating magnetic field called rotor magnetic field, and this rotor magnetic field will have a frequency SF. As the rotor is running at a speed n, rotor RMF also rotates at ns only in space. Rotor RMF rotates at ns only with respect to stator or space. This is an important concept what you see in induction motors commonly. So always remember, in the air gap there is a net flux, absolute flux or a net flux or air gap flux simply called as, which is rotating at synchronous speed. So when we think about the question now, first what you are asked is speed of stator magnetic field with respect to rotor magnetic field. Speed of stator magnetic field with respect to rotor magnetic field. What is the answer? Both are running at same speed. Stator magnetic field, rotor magnetic field running at same speed, synchronous speed, that's it. Otherwise induction motor cannot run, as you know. So answer is 0. These to anyone. Next what you are asked is speed of rotor. Speed of rotor with respect to stator magnetic field. What is stator magnetic field speed? 1000. Stator RMF speed is at which speed? 1000. Now what is rotor speed? 950. Rotor is at 950. So rotor speed with respect to stator magnetic field is lesser. So how much means 1000 minus 950, that is 50, minus 50 is the answer. Now based on this, let us deal some concepts like this. Now all of you answer one by one all these questions. These are important concepts. If you see previous year questions also, you will see many questions on this. Read the question and answer one by one. Six pole NS is 1000. 3% slip N is 970. In the air gap there is stator magnetic field as well as rotor magnetic field, that combined magnetic field. That's what is called as air gap field, is running at which speed? Answer is
1000 rpm. Speed of air gap field. Nothing is given to you with respect to stator. You have to take. Nothing is mentioned. Speed of air gap field in space. If I leave the marker, this marker will go down with some speed. With respect to what means you will say with respect to space only, right? Like that. You have to answer like that. So here the problem is you will think with respect to what? Nothing is mentioned. Take with respect to space only. Next, speed of stator field with respect to stator structure. Clearly given. Stator field with respect to stator, ns. Next, speed of stator field with respect to rotor. Speed of stator field with respect to rotor. Stator field is going at synchronous speed naturally. Flux always moves at synchronous speed. Rotor is going at 970. So answer is 30. Next, speed of rotor field with respect to stator. Stator is stationary. Rotor field is rotating at synchronous speed naturally, ns. Next, speed of rotor field with respect to rotor structure. Rotor field is rotating at ns. Rotor is rotating at n. So speed of rotor field with respect to rotor structure means again 30. Even if you are asked speed of stator magnetic field with respect to rotor structure, answer is 30 only. Next, speed of rotor magnetic field with respect to stator magnetic field. As both are running at synchronous speed, answer is 0. Hope you understood. I'm moving on to the next question now. A slip ring induction motor drives a constant torque load in voltage control method. Supply voltage reduces to half its previous stator voltage. Then slip and rotor current gets modified by factors of. This is the basic torque slip characteristic of induction motor for a given voltage V, let us say V1. If the voltage is reduced by 10%, 20%, 30%, 40% like that, the torque slip characteristics looks like this.
As voltage reducing, the torque level also reduces because T proportional to V square. So if this is V1, if this is V3, if this is V2, then if you notice one thing, constant torque load means irrespective of the voltage level, V1 or V2 or V3, torque remains constant. Now, for a voltage V1, this is the operating point. For a voltage V2, this is the operating point. For a voltage V3, this is the operating point. So definitely we have different slips for different voltages. However, torque remains constant. So now I want to write an equation. As you know, T proportional to SV square. So first case, S1 V1 square. Second case, S2 V2 square. Third case, S3 V3 square. It will go on like that. Different slips, different voltages, but torque remains constant. So S1 V1 square is equal to S2 V2 square. That's it. So now let us solve the question. Supply voltage reduces to half, which means V2 became V1 by 2. That's it. So S1 V1 square is equal to S2 into, in place of V2 we have to keep V1 by 2. Then S2 is 4 times S1. If voltage is halved, slip is increasing by 4 times. Slip increasing by 4 times means speed is definitely decreasing to maintain the torque constant. This is first aspect. Second aspect is, in such case, the current drawn by the motor will be certainly affected. It will increase. How it will increase, how to calculate it, I will tell you now. Remember, the induction motor current I1, current drawn by induction motor I1 is a combination of I0 and I2 by K. I2 dash is running condition. Neglecting I0, I1 is proportional to rotor current. K is a constant, turns ratio. Neglecting I0, which is a no load current, I1 is proportional to I2, which means rotor current. So remember, current drawn by the motor significantly depends on rotor current. Current drawn by the motor is proportional to rotor current, that's it. Now rotor current equation I will write. I2 is SC2 I2 is SE2 by root R2 square plus SX2 square. Now, in induction motor analysis, under normal running conditions, we can ignore this factor. S square term can be ignored for analysis purpose, simple analysis purpose. So, if you ignore this terminology, the remaining is SE2 by R2. So, finally what we can write is, the induction motor current drawn I is proportional to I2
is proportional to SV by R2, or simply if R is not changing, I is proportional to SV. Remember this formula to deal these kind of questions. The induction motor current drawn I can be directly written as I proportional to S into V. How it came is like this. Now from this we can calculate what happened to the current. What happened to the current? Here it is asked rotor current. Even if it is not asked rotor current, even if it is asked simply current or current run by the motor, you can deal the same way. I2 by I1, second case, first case, is equal to S2 V2 by S1 V1. You know, S2 became 4S1, V2 became V1 by 2. If V is halved, to maintain the torque constant, slip became 4 times. There doesn't end the concept. If slip become 4 times, the motor must ask more current than normal case. How much it is asking means 2 times. I2 is 2 times I1. So as I want to accommodate transformers questions also, I kept some equivalent circuit questions also for induction. So I'm moving on to transformers now. Now let us deal the transformers questions. The 3-winding transformer has turns ratio 5:1:4 if transformer primary is supplied with 20 volts and 2 resistive loads in secondary and tertiary 20 and 80 ohms respectively. Find the power drawn from the supply. To make you understand, to visualize it easily, I will draw a simple circuit for it.
primary, secondary, tertiary. Five is to 1 is to 4. 5 is to 1 is to 4. Turns ratio K12, primary to secondary, turns ratio is 5 is to 1, 5. Next, K13, primary to tertiary, turns ratio is 5 by 4. Next, supply voltage 20 volts. Then, because 5 is to 1, turns ratio is K, that is 5. The secondary voltage is 20 by 5, 4 volts. And across the terminals there is a load. How much? 20 ohms. 20 ohms. So I2 is V by R, 4 by 20. Next, 5 is to 4 turns ratio from primary to tertiary. So what is the voltage across the tertiary? 20 by 1.25. Here we get a voltage 16. Here there is another load. How much is the load? 80 ohms. Now I3, (16 by 80). So I2 value 4 by 20. You know, if there is I2 in the stator, I2 in the secondary, there will be I2 by K12 in the primary, its component, I2 by K12. Similarly, if there is I3 in the tertiary, I3 by K13 will be there in the primary. Tertiary should be treated as extra secondary only, nothing else. Actually, same. What secondary will do, tertiary also will do the same thing. I2 dash is 0.2 by K. Next, as it is a resistive load at an angle 0, I3 is
So finally, the current drawn by the primary I1 is the summation of I2 dash and I3 dash. After that, what is the power drawn by the primary? VI cos phi. As it is mentioned, all unity power factor. Nothing is mentioned in the question about magnetizing current. If there is magnetizing current, you have to add there also. No load current is given. Nothing is mentioned. So directly you can say power input is. So remember, you have to treat tertiary just like secondary, nothing else. Next question. (200 by 400 volt 50 Hz 2-winding transformer is rated 20 kVA. Its windings are connected as auto transformer of rating 200 by 600 volt. A resistive load of 12 ohms is connected to high voltage side of auto transformer. The value of equivalent load resistance seen from low voltage side. First, it is 200 by 400 volt. It is reconnected as auto transformer 200 by 600 means additive polarity 600. This is 200 volt winding, this is 400 volt winding, both are connected in series, so 600 volt. This is the auto transformer. Now what is given is a resistive load of 12 ohms is connected at high voltage side. RL 12 ohms on high voltage side. Now what is asked is, what is the equivalent load resistance as seen from low voltage side here? Which means if you use the same auto transformer, as this as source, this as load, here what should be the load resistance? Simple. If you know K value for auto transformer, if you want to shift from output side to input side, secondary to primary, kind of similar to that in transformers, into K square, same theory you have to apply here. Normally in transformer what we do, if there is resistance here in the secondary, if you want its equivalent into K square, if there is a resistance, if you want its equivalent into K square, same theory. But I want to let you know one thing, K in auto transformer must be taken as less than 1. The theory of auto transformer is this only. If you see the analysis, K must be less than 1, it should not be greater than 1. Always you have to take VLV by VHV. So K value here is
200 by 600, 1 by 3. So equivalent load referred or LV side is 12 into k square, means 12 into 1 by 3 square, that is 12 by 9. A 50 Hz transformer having equal hysteresis and eddy current losses at rated excitation is operated at 45 Hz at 90% of its rated voltage. Compared to rated operating point, the core loss under this condition is. The concepts of iron losses are very important in these competitive exams. You know iron loss, eddy current loss, hysteresis loss, two components in iron loss. Pi is a combination of Pe plus Ph. Next, Pe is proportional to B square F square. Ph is proportional to B power 1.6 into F. Whenever you are given a question in iron losses, first step is check. Is the question containing a concept where V by F maintained constant or not constant? That's it. If V by F is maintained constant, simply take like this. P proportional to F square, P H proportional to F. That's it. The question will be belonging to these two expressions only now. Once you feel the question contains a concept where V by F is maintained constant, then PE proportional to F square, PH proportional to F, because B is constant. V by F, B is proportional to V by F, that's the reason. Then in this question what is mentioned is 50 Hz is operated at 45. Excitation means voltage is operated to 90%, means voltage is reduced by 90%, frequency is also reduced by 90%, so V by F ratio remains constant. Then what we have to do? Here one link is there in the question. What is the link is? Equal hysteresis and eddy current losses at rated condition. At rated excitation, at rated voltage, at rated frequency, both are equal. So let us solve the question from there. Given first PE1 is equal to PH1,
PI1 is equal to PE1 plus PH1. As both are equal, since both are given equal, you can say P1 is equal to Pi1 by 2, Ph1 is equal to Pi1 by 2. Next, according to question, V by F is constant. Pe2 by Pe1 is F2 by F1 square. Ph2 by Ph1 is equal to F2 by F1. So using the two equations, P proportional to F square, PH proportional to F, you can make it like that. F2 is 90% reduction, F2 90% reduction. So 0.9 square, 0.9. In place of PE1, you can take PI1 by 2. In place of PH1, you can take PI1 by 2. So add these two now. So Pi2 is equal to Thank you for the answers. Thank you for the response. So Pi2 is 0.855 Pi1 you will get finally, which means
The iron loss in the second case became 85.5% of first case, which means there is a reduction of 14.5%. So if V by F is constant, this is the way we have to deal. What if V by F is not constant in a question? These formulas we have to prefer if a question belongs to V by F ratio not constant. PE proportional to V square, pH proportional to V power 1.6, F power minus 0.6. A 50 Hz 220 by 400 volt 50 kVA single phase transformer operates on 220 volt 40 Hz. V remaining constant, F reduced. Clearly V by F ratio not constant. If V by F ratio is not constant, what you have to check is PE proportional to V square, pH proportional to V power 1.6, F power this we have to see. Then voltage remaining constant 220 220, but what happened to frequency? Reduced. So as voltage remaining constant, eddy current loss unchanged. Eddy current loss unchanged, but as frequency reduced in the second case, hysteresis loss must increase. So hysteresis loss increase, eddy current loss remains same. When the transformer winding suffers a short circuit, the adjoining turns of the same winding, turns of a same winding is the context. Turns of the same winding, which means
all the turns in a specific winding will be, the current will be flowing in the same direction. As the current is flowing in the same direction, turn to turn there will be a force called Lorentz forces. How to know? For example, if there are two wires carrying two currents. In this, current is flowing up, in this also current is flowing up. Two wires carry current in the same direction, imagine. This current will produce a magnetic field based on right hand grip rule. Current is going up, flux lines are going inside. Inside means going away, inside going away, cross. Arrow mark going away, when you are here you will say cross. Arrow mark coming towards, you will say dot. That's the basic. So here if you want to represent flux lines going inside, coming out, so I am putting cross. Current going up inside. In the next conductor also current is going in the same direction because you were asked between turns in the same winding. So when current is going up, here also the flux lines go in the same direction. Inside, inside again. Go inside and come outside. Now you know the magnetic fields based on the polarity, north and south, opposite polarity attract, same polarity repel, right? See here magnetic field, one notation cross. See here magnetic field, opposite notation dot. If you take one north, other one is south. No, if you take this north, this one is south. So what does opposite magnetic fields do here? They attract. So these two conductors attract. So there is a force of attraction between them. I want to tell you one more logic in the same question. If the same question is asked, what is the force between LV, HV windings or primary, secondary windings? Here, within the same winding. Question is within the same winding. If you are given between LV, HV windings, as you know, on the limb, on the leg, we place LV first to reduce insulation requirement. On that we place HV. So imagine LV is placed first. This is LV. It will have a specific orientation. Imagine it is coming out, going in. Coming out means dot, going in means cross over. This is LV. On that we are placing HV, of course LV by 2, HV by 2 like that. Here when you are placing HV, as per Lenz's law, the current in the other winding, HV winding, will be exactly opposite to the current in the primary or LV winding like that. So you have to take now if there is HV here after insulation like this. If the current is passing in this way, here now the current will come like this and go inside. This is what is happening. So current within the turns of same winding
is in the same direction, but currents between LV, HV, primary, secondary are exactly in the opposite direction. If it is like that, if it is like this, then if you track magnetic field, what we did previously, same, up, down, this is cross, this is dot. Now down means lines, flux lines going inside. Inside means cross again. Now cross cross, the magnetic field polarities are matching. It's like north north or south south. So what they do, they repel. Here repulsive force. So here two questions. The force between the turns of the same winding, attractive. Between LV, HV or primary, secondary on the same limb, repulsive. The percentage resistance and percentage reactance of 10 kVA 400 by 200 volts is given to you. 2% first. Percentage R is percent copper loss. 2% given to you. Next, constant losses, 1% given. And the question is all about maximum possible efficiency. Maximum possible efficiency happens for three cases. Three cases means three concepts I want to put before you. Number one, it happens only for a particular fraction of loading called X. What is X means? Root iron loss by full load copper loss. As for the question, iron loss 1%, full load copper loss 2%, so 1 by 2 it is 0.707, root 1 by 2. So maximum efficiency happens only for fraction of loading X, nothing else. Second, so first one is over. Second one, maximum efficiency happens only for unity power factor. Number two, in place of losses, simply put 2 times Pi. In place of losses, simply keep 2 times Pi, that's it. Over. Now, losses are given in percentage wise or per unit wise. So, efficiency formula, output by output plus losses. Output means load factor into volt ampere rating into power factor. Load factor, volt ampere rating, power factor plus losses. This format we can make it as easy as possible because the losses are given in percentage. So what I'll do is I'll take 10 kVA as 100%, means 1 per unit. And what's the fraction of load? 0.707. So max efficiency is 0.707 into 1 into 1. 0.707 into 1 into 1 plus 2 times Pi. What is Pi? 0.01. 1% into 100.
This is maximum efficiency of the machine, of the transformer. Or if you want, you can do one thing also, convert losses is 1% loss is given, right? 1% loss into watts by multiplying into rating, simple. So keep here 2 times iron loss, multiply with rating, here keep rating, here keep rating, question is over, same answer you will get. $97.25. Thank you for the response. Next question. A 10 kVA 400 volt by 200 volt single phase transformer with 10% impedance draws a steady state short circuit line current of. In the theory you will see the formula. Short circuit current ISC1 is equal to 1 by Z per unit into I1. So 10 kVA 400 volt, I1 is 10 kVA and you know ISC1 is equal to 1 by Z per unit. 10% impedance means percentage by 100 gives you per unit, so 0.1. The percentage impedance of 100 kVA 11 kV by 400 volt delta Y 50 Hz transformer is 4.5%. For the circulation of half the full load current during short circuit test, the low voltage terminal is shorted. So here VSC is Z per unit. This concept you have to apply to solve this question. Remember always, when the transformer secondary is on short circuit, you cannot apply rated voltage across the primary. You have to apply a small voltage so that it will circulate rated current. V and I are directly proportional to each other. If V is halved, I is halved, like that, because it's a simple circuit only. What I want to convey finally is like this. What is the amount of voltage requirement to produce rated current on short circuit is nothing but Z per unit. VSC per unit. VSC per unit is Z per unit, or VSC by V is equal to Z per unit, or VSC is equal to Z per unit into V. That's it. So when you want to calculate VSC value on any side, directly take Z per unit and multiply the voltage on that particular side.
This is to ensure rated current. So first, what is mentioned in the question, low voltage terminals are shorted, clearly given. So you want to apply voltage on high voltage side. So 4.5% means 0.045 into 11,000. This value is VSC to ensure rated current. But what you are asked, not rated, half. So 0.045 into 11,000 by 2 is the answer. The resistance and reactance of 100 kVA, 11,000 by 400 volt delta star distribution transformer are 0.02 and 0.07 per unit respectively. Per unit value is actual by base value. So if per unit values are given to you and if you are asked to calculate actual value from it, all you need to know is base value on that particular site, because base value keeps on changing whether it belongs to LV side or HV side. Star delta, here I have taken specifically this, in it has delta star combination. This is delta, this is star. Now actual value is per unit into base value. So what you are asked in this question is actual value, ohms. Now how to calculate actual value from per unit value? All you need to do is base value. Remember which side is asked? Primary side. So base impedance calculation, Z base. Remember, whether it is 3-phase or single phase, whatever it may be, just put in your mind when you are calculating, it should be per phase. Single phase is no issues at all. That's a very simple thing. V by I gives you it. Voltage rating by current rating on that particular side gives you the base impedance on that particular side. Easy. Single phase is not a big deal. Where is the problem? 3-phase side. In 3-phase side, you must go with per phase. For example, Z base is V base by I base. First, 100 kVA given, delta √3 VL IL is equal to 100 kVA. Then IL is 100 kVA by √3 into 11,000. This is IL. Remember, you have to finally convert to phase value. So this is line value.
So you have to calculate per phase value, and then V base by I base is 11,000. By this I base value you have to keep IL by root 3. So let's KVA. So if you calculate, this will give you 3630 ohms. So actual value is 0.02 plus J 0.07 into, answer is D. Dear students, as the time is 9:30, I'll conclude the session here. Thank you so much for joining. Wishing you all the very best.